देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है, और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है, और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी की उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा। हो आगामी निवडणुकांमध्ये याचा फायदा होईल या निकालाचा? 100% फायदा होईल, कारण आत्तापर्यंत एक संभ्रम होता की खरी शिवसेना कोणाची, आणि म्हणून अनेक लोक, विशेषतः अनेक शिवसैनिक हे कुंपणावर होते आणि वाट बघत होते खरी शिवसेना कोणती। आता त्यांना समजलंय खरी शिवसेना कोणती, त्यामुळे ते खऱ्या शिवसेनेत जातील। काही आमदार खासदार पण येणार का? It has been decided who the real Shiv Sena is, but there are those from Team Uddhav who are not losing hope. Ambadas Danve says लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, पर तूफान से लड़ने का मजा कुछ और ही है। Times Now will keep you ahead in this fight for Bala Saheb's legacy. Right now it's over to Editor-in-Chief Rahul Shivshankar for the day's biggest debate. Thanks indeed, Priya. Yes, viewers, we're going to keep an eye on that story because at about 8:30, and be sure to stay with us till then, we're expecting Uddhav Thackeray to give a composite and comprehensive response. But in the meantime, viewers, it's been one of those very, very big news days. The NDA government, as you all know, has been fairly open about suggesting that it is the victim of a slander campaign run by an ecosystem of ultra-leftist Marxists in India and abroad. A few years ago, it even sought to identify the individual they believe funds this endeavor of not just destabilizing the government, but also by doing so undermining India's democratic credentials and its institutions. Well, viewers, the NDA then settled upon George Soros, Hungarian-American billionaire who positions himself as a political activist. The NDA believes that Soros founded and funded open society foundations to pump money into Indian media and think tanks to destabilize the Modi regime, and with that the political stability of the country by constantly perpetuating myths to misinform the people, spread disinformation with the view of sparking anarchy, civil unrest, and most importantly, viewers, a civil war. The NDA was so convinced of Soros's designs, alleged designs, that it put the Soros Foundation on a watch list. The foundation hit back and challenged its inclusion on the watch list. The matter is in court. This has been going on now for 3 years. Today, however, viewers, in spectacular fashion, the gloves are off. George Soros has targeted Prime Minister Modi from an international pulpit. Raking up the Hindenburg hit on Adani, Soros said that this was guaranteed to weaken Prime Minister Modi as it would spark a democratic revival in India. Listen to Soros as he hopes for regime change in the country before 2024. Listen in. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount. Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold
on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. Viewers, it's interesting that George Soros should talk about India being a member of the Quad, but purchasing Russian oil at cheap price. Now, viewers, this is clearly an attempt to get the Quad partners to turn against India, but he didn't answer the fundamental question: who is buying that oil? Yes, companies, not the Indian government, viewers. Oil marketing companies are out there and they're picking up the cheapest oil. That oil, viewers, is then rerouted by these companies where? To Europe. To Europe, viewers, to the Americans, to any and every bidder. They all know the source of this oil. They don't say no to it. Viewers, for a very long time, for a very, very long time, Mr. George Soros has been running an agenda against even Russia, forgetting that it was the West, and you just have to go back into history, that continued to invest in NATO even after the fall of communism. Clearly, viewers, the West, to further the interests of its own military-industrial complex, wanted to paint Moscow as a force inimical to democracy, even though communism had collapsed. And for a while, Moscow was embracing democracy. They never let it in either to NATO. What was the reason to have NATO, viewers? Think about that. Nonetheless, stung by what they believed is a direct call to meddle in India's internal affairs and spark disaffection against the NDA government, the BJP fielded Smriti Irani, and she countered Soros. Listen in. जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। उन्होंने एक फंड का ऐलान किया, $1 बिलियन का, जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है वहां पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट स्टैंड्स बिटवीन दैट वॉर एंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। So is George Soros really, viewers, a non-state player looking to dislodge the Modi government? Our reporters have gathered some open source intelligence that reveals an allegedly insidious plot against the Modi government and beyond. Why, viewers, beyond? Because the hope is to thwart India's rise by injecting a sense of anarchy, instability, and through that, viewers, a complete mistrust of India's democratic institutions. So here is what we have gathered, and let me just take you through it. Geopolitical interference by a non-state player shows powers working against India's interests. So this is what is being talked about in intelligence circles, and it's being put out, viewers, through different views and means. Soros runs destabilizing economy operation through Open Society Foundations. Open Society Foundations is, of course, a platform that he set up. In January 2020, he pledged $1 billion to bring India's authoritarian regime down. In fact, George Soros has come out and even owned up to this mission. And he says that the Modi government is an authoritarian regime. The NGO left media that creates chaos halts development process linked to Open Society Foundations. After his 2020 anti-India speech, OSF put in prior permission list of FCRA. As I told you, viewers,
But these organizations work in tandem, making a complex web of funds movement. So all this fund constantly moves. It's very difficult to pin the source of the money down. It's not difficult to pump money in India. Soros is a strong pillar of that ecosystem. This is all that is being revealed, viewers. Left liberals across the world are a cheap labor and act as deep state of organizations like the OSF. The idea is to penetrate into institutions and then start undermining them. Soros has come out in the open with sinister plans to corroborate this research. Now expect more chaos, psyops, financial attacks like Hindenburg. 2024 is probably the last chance for an old man, Soros, to realize his plans. And remember, Soros was under the lens for shorting the Bank of England. That was a massive hit, viewers. The Bank of England lost more than $1 billion. So this individual is not someone who can be treated lightly. Soros' specifically anti-Modi stance is no secret. George Soros himself in 2020 pledged $1 billion to fight nationalists with an aim to bring down what he calls this authoritarian regime. He identifies the Modi regime with authoritarianism. He says, I've committed $1 billion to start a global university to fight nationalists and climate change. These are the twin challenges that threaten the survival of civilization. Prime Minister Modi is creating a Hindu nationalist state by imposing punitive measures on Kashmir and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. Now, viewers, where is this money being spent, and does it prompt the recipients to take an anti-Modi line, even at the cost of sometimes rewriting the truth? Let's walk you through where this money ends up. And viewers, Open Society Foundations itself declares where it puts the money. It's unabashed. So viewers, Reporters Without Borders is an important recipient. It's ranked India at 150 in the Press Freedom Index. It is funded by Soros. This is not the only agency, viewers, that is in the business of certifying democracy and credentials. Let me tell you, in 2009, Freedom House, you'll remember Freedom House, it's often quoted by the Congress Party, the opposition in this country, was part of donor partners of Open Societies Foundations. You can go on the net, check with Open Societies Foundation, you see it there. Freedom House, of course, viewers, keeps downgrading India on the Freedom and Democracy Index. Remember that. In 2021, VDEM Index that downgraded India on the Freedom and Democracy sweepstakes, funded by Soros, once again, they downgraded India from being the world's largest democracy to an electoral autocracy. Rahul Gandhi, the Congress, the opposition, many parties all tweeted this out, saying that this proves the point that they have been making about India becoming an autocracy. So these are at least two of these issues. Amnesty and Forbidden Stories, part of Pegasus. Remember, viewers, they are the ones who said that Pegasus was being used to snoop across this country on just about everybody. Amnesty and Forbidden Stories, part of the Pegasus entire investigation, revelations, they were given grants by Soros' NGO. Sherpa. Sherpa is a media group partnered by Open Society Foundations. Once again, Soros' group. Sherpa had taken the French government to court over the 36 Rafale jet deal, which was signed with India. It's quite funny, viewers. It all seems to keep going back to one individual. He funds a number of organizations in India, and let's just talk a little bit about that. The International Press Institute awarded The Wire as the free media pioneer. Again, it's funded by Soros. Just think about that, viewers. Peace Research Institute Oslo, the PRIO, you remember them? They nominated Mohammed Zubair for the Nobel, again funded by Soros. It's all out there. Open Society Foundations talks about this. Just go and check. International Fact-Checking Network, IFCN, as it is called. Alt News, a fact-check signatory. It made it one, again funded by Soros. This is all open source intelligence. You can just click on this particular foundation set up by Mr. Soros, and they
admit to it openly. The BJP claims that it has also decoded an interesting web of vested interests that are tied in with the Congress. So, founded the Open Society Foundation, as I told you, viewers, founded by Soros. Let's go to the next one. The web of vested interests. Let's go to that. That's right. That's on your screens. Just pay attention. Namati, a benefactor of CPR, which is the Center for Policy Research, which is a think tank. It is headed by, according to government sources in the BJP, Manishankar Iyer's daughter, Yamini Iyer. Let's not also read much into this. If you were to just think for a moment that what's the big deal? All these organizations are in the business of supporting democracy. So what's the big deal? Well, let's go a little further. Soros has, the BJP claims, close links to the Gandhi-Nehru family. Soros links to the Nehru Gandhis. Salil Shetty, who is a big wig in the foundation set up by Soros. He's the vice president, was seen marching with Rahul Gandhi in the Bharat Jodo Yatra. There you can see them. Manmohan Singh, the late, the daughter of Manmohan Singh, is at OSF, which is Open Society's foundation, and she works as a director in New York. Whether this is sheer coincidence or if this is part of a larger, some sort of a larger cabal of intrigue, we can't say. Soros friends with Fauri Nehru. Fauri Nehru was married to BK Nehru, Jawaharlal's cousin. He came in a private jet to wish her on her 100th birthday. Viewers, so there's also sort of family friendship. Obviously, viewers, the Congress and others are today suggesting that while they may not agree with Mr. Soros, he isn't off the mark when he suggests that there is a huge problem with relations to the Adani story and Adani's contacts and his connections with the BJP, especially the Prime Minister Narendra Modi, and that needs to be investigated. And of course, the matter is pending before the Supreme Court even as we speak. Let's open this up. Let's ask some basic questions. Now, I want to begin with Mr. Amit Malviya, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Mr. Malviya, look, there is no crime in fighting for democracy and its upkeep anywhere across the world. Why not? It's the best thing that humankind gave itself in the modern era. So if someone feels passionately about democracy and they fight for it and they fund people who want to fight for it, what's wrong with that? Why should we believe that there is more to this entire exercise than what obviously is the intention? Well, Rahul, most certainly, everyone has the right to fight for democratic values and what they believe to be right. But who exactly is George Soros to interfere in India's internal matter? He's not an Indian citizen. And last I knew, he was a billionaire investor who is known for his reputation, a notorious one at that, for meddling in affairs of democracies around the world. And what is it that changed for George Soros between 2006, when he was here in India, and in an interview to a media organization, spoke eloquently and very positively about India, saying that it has everything going right for it, it is the emerging market to watch out for, except the fact that the government changed and the new dispensation took office soon after, and that probably was not to his liking or wasn't pliable enough as he would have liked. There are several coincidences to suggest that George Soros has a truck with India's opposition party, starting from Shashi Tharoor, who met George Soros just before the cabinet expansion or swearing in 2009, and several other leaders have at different points in time met George Soros and have spoken quite eloquently about his vision for India and the world. So clearly he seems to be not comfortable with the current regime, which is not perhaps willing to play ball with him and his investment interests. And that is why he wants
a government that is more pliable, that is more suited to his interests, and that probably explains the $1 billion that he put out or pledged to target rising nationalism, as he called, or would-be dictators. Now explain to me how a prime minister elected by 1.3 billion people is any less worthy of being in office because somebody called George Soros with $1 billion thinks that the country deserves someone else to be the prime minister or there should be a different regime. It's quite simple. The man has voracious greed for making money. He uses financial markets to do that. He has done so successfully with Bank of England and has wreaked havoc in several other economies and has perhaps even managed to unsettle some governments and got better. But this is India. It has a far more resilient democracy, and despite his Indian collaborators, who are of all hues, they exist in political parties, primarily the main opposition party, the Congress, and there are also some busybodies, some NGOs, some lawyers who routinely file matters and take them to the judicial route, use litigation as a legitimate tool for agenda setting and narrative. And we've seen that quite aggressively 2018 onwards, from the violence and the big push for scrapping the sedition law that came after the violence of Bhima Koregaon, the farmer agitation, the CAA protest, most recently the Rafale controversy, Pegasus. All of them have an imprint of George Soros. They are somewhere linked to organizations, to media houses, to professionals, to activists, to busybodies who are funded by George Soros or have a truck with him, have attended conferences, been seen with him, or in general are part of the cabal that is left-leaning and funded by the billions that George Soros has earned through his malpractices or manipulating markets, if you like it. Okay, so let me just very quickly open this up further, and I'll bring in Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan, look, there is an interesting point that Amit Malviya makes. He says, what changed? Well, under the UPA, if he was handing out certificates of democracy, then a very quick recap just of what the UPA was about when it came to upholding democratic principles. Now, Dr. Manmohan Singh himself, let me tell you, viewers, identified Indian citizens as the enemy number one. If you remember, viewers, Maoists, he called them. It's the enemy number one, the most dangerous internal security threat to the country. And he was right. Unfortunately, today, they speak up for urban Naxals. Oh, sorry, I forgot. Urban Naxals, the term was brought up, coined by the UPA, submitted in an affidavit to the Supreme Court. Today, of course, they say that urban Naxals are dissenters who are being shafted by the Modi government. That's a very interesting one. Then, of course, viewers, sedition cases, Section 66A. Nothing really spectacularly has changed. They went after NGOs, viewers. NGOs amnesty was first surveyed, in a sense, by the UPA. FCRA licenses. Other organizations, certain Muslim groups that in fact, when attacked by the Indian state, Sonia Gandhi cried over, were also banned by the UPA. So viewers, they were on the right track, yet Soros had no problem. Modi comes and just takes it a bit forward, and Soros has a problem. Dr. Ranganathan, who has the real problem? Good evening, Rahul. Look, one can't help but think of George Soros as a comical Bond villain. A geriatric jellyfish hobbling around in a Zimmer frame 10,000 miles away and dreaming of a rose-tinted revolution just because he has collected some chauthi-fail hacks and activists by throwing pennies in their piss pot. But sadly, the BJP is doing it the wrong way around. Rather than rebutting what he is saying, they are rebutting why he's saying, and he has full right to do whatever he wants to do. So let me expose him with data and facts on everything that he said. This may take a couple of minutes. Please bear with me. Number one, enough has been said in Adani, but I'd recommend Soros read that brilliant data-driven op-ed yesterday by our ex-CEA, Dr. Subramaniam, in Times of India, completely exposing Hindenburg and other people's agenda. Number two, as for Soros's claim that
India is not really a democracy under Modi. Let me inform this sun-dried turnip that the real test for democracy is the independence of two institutions, Supreme Court and Election Commission. And under Modi, these two are not compromised, whatever their feelings may be. Everything else in an Indian democracy, Rahul, is being stifled as much now as it has ever been. Because sadly, there is constitutional approval for it. Like, for example, on freedom of speech and religious freedom. And what democracy is Soros talking of when a professor is arrested for sharing a Mamata cartoon in Bengal and acquitted after 11 years? Or when the communist government in Kerala books 120 people for social media posts criticizing CM Vijayan? Or when there exist as many as 285 documented instances of brutal trampling of democracy under the Congress, 87 of those in the last 15 years, including 9,000 activists charged with sedition in a single day. Truth is, Soros' own foundation and its cohorts actively subverted democracy in India by supporting and fanning the illegal Shaheen Bagh and anti-farm bill blockade protests. Truth is, Modi has never unilaterally in the last 8 years overturned a Supreme Court verdict like Rajiv, never abused Article 356 like Indira, never passed a press objectionable act like Nehru. Number 3, and as for Soros' claim that Modi is anti-Muslim, let me educate this rancid custard further. Truth is, Modi as Prime Minister has done more for Muslims than he has for Hindus. Let me explain. Has he taken control of mosques like he has of Hindu temples? No. Has he disbanded the scholarships for Muslim students? No. In fact, he has given scholarships to more Muslims than Manmohan Singh did. 2.37 crore versus 2.33 crore. Has he overturned the SC Sabrimala judgment to placate Hindus like the Shah Bano judgment was overturned by the Congress to placate Muslims? No. Has he reduced AMU funding? No. In fact, he has increased it, including a 90 crore topping up. Has he abrogated the Anti-Hindu Place of Worship Act? No. Has he repealed the Anti-Hindu RTE? No. Minorities before 2014, 20,000 skill trained, 5% with government jobs, 3 crore scholarships, 70% girls school dropout rate. Minorities after 2014, 2 million skill trained, 10% with government jobs, 5 crore scholarships, free UPSC coaching, 30% girls school dropout rate, while our Muslim population is 14.2%. As many as 31.3% of homes under Awas Yojana, 33% of funds under Kisan Samman Nidhi, and 36% beneficiary under Mudra Yojana have been Muslims. Housing, skilling, scholarships, government jobs. No other Prime Minister has comparatively done more for Muslims than Modi. Rahul, you can give a million rebuttals to these illogical, selective, propaganda and fake narrative driven NGOs and foreign media outlets and their handlers. It only encourages them. What they can't stand is the rebuttal Modi dishes out to them once every 5 years. Kasam se us ek thappad ki goonj is what hurts them. Just 30 seconds. Modi is delivering growth. Soros is delivering anarchy. Modi is strengthening rural economy. Soros is strengthening mobocracy. Modi is building highways. Soros is building media houses. Modi is funding urban centers. Soros is funding urban naxals. Trust Indians, ignore Soros. Well, Sanjay Jha, is it a coincidence that all those who flock under the banner of dissenters and shed tears for a democratic backsliding here in India are funded by Soros, who has set aside a $1 billion bounty over Modi's head? Is there a coincidence here? Rahul, I hope you will have it's a reasonable expectation of mine that you will give me the same amount of time that you gave to the BJP spokesperson and to the author, to the eminent author. Now, let me make my points in a very succinct fashion, but they need to be stated, and I will appreciate if you don't interrupt me. I won't take too long. Point number 1, I don't want a diversion. Let's come to the bottom line here. Who is Gautam Adani's sugar daddy or fairy godmother? It is Narendra Modi. And the Prime Minister of India will have to speak up and open up on that. He can't dodge it by this Maun Vrat that he did in Parliament. Point number 2, if any political party has damaged India's reputation globally, it is the BJP. We are a laughing stock of the world. And I can tell you something, Rahul, you are part of a very big media group. Narendra Modi and the BJP can throttle Indian media. Unfortunately, beyond the borders of this country, there are democracies, there are media which take on their own governments, and now they're taking on Modi and his government. It's nothing very peculiar. In fact, it's something that we should welcome. That at the end of the day, this government is facing the music that it should have earlier, frankly, from our own shores. Point number 3,
and this is critical here, and I'm going to quote to you. Are you trying to tell me that Morgan Stanley, Moody's, Citibank, Standard Chartered, Credit Suisse, Total Energy, Dow Jones, Standard & Poor, who have rubbished the Adani stock, either in terms of weightages on the index or giving it a negative outlook, are they wrong? Are they banana republic or what? I mean, this is exactly what George Soros is saying. Point number 4, very important, and let me quote to you. George Soros says that Narendra Modi is killing democracy. Let me quote to you The Economist. Because, everyone from the BJP runs to the Davos every year, right? This is what The Economist said. Intolerant India on its front cover. And then this is the subtext. How Modi is endangering the world's biggest democracy. I'm not going to talk to you about New York Times, Washington Post, because now what these right-wing guys are going to say, I quite understand that. The very fundamental point. George Soros, by the way, has also taken on China, has also taken on Turkey. The countries that I believe Mr. Modi's government is very worried about. Is taken on Russia, which is, by the way, the kingpin of a disinformation war against democracies. We all know that. Fundamental point, institutions. If India's institutions were healthy, Rahul, if SEBI was working, if the Minister of Finance was working, if the RBI was working, if the DRI was working, if the CBI was working, Gautam Adani would not have had a party where his assets, or rather his net wealth, went up by 85% of his wealth happened in 3 years. I mean, what kind of a banana republic has the BJP made this country? You can go and clamp the BBC, but let me tell you something very honestly. Some people are not going to like it, but the truth must be said. The BBC has a credibility that the BJP will probably never have in its entire lifetime. And I think it's about time they accepted this reality. You can frighten, you can threaten an online platform, you can scare a Times Now. And I can tell you something, Rahul. Tomorrow, if this government comes against your channel or goes against an NDTV, which happens to be Adani's channel for all I care, people like us will fight for you. Because we believe India needs a transparent media. And I know today many journalists, I have friends across the fraternity who came and told me that, you know what, end of day, maybe this is just desserts for a party that is using its brute power to try and throttle, subjugate, make the domestic media subservient. Right. But the foreign media is calling a spade, and it's hurting them. So that is the hard truth that we need to put on the table. So are you done? Because you inevitably draw in Times Now. पहले आप अपने पार्टी को बोल दो कि अपना स्पोक्सपर्सन तो भेज दे, बाद में आप बोलना कि वो कब किसके साथ खड़े होंगे. पहले आ जाओ, डिबेट पे तो आ जाओ. I'm working on that anyway. कितने सालों से बॉयकॉट क्यों कर रखा है? If you know the problem, if you think that someone's got their jackboot on our jugular, then send your spokesperson here so he can expose them. Yeah, no, absolutely. And so Rahul, then, tell me, if you can't stand up for... and you want to stand up for... No, hang on, you want to stand up for the British press. यहाँ पर थोड़ा अपनी press के लिए भी कुछ कर लीजिए. हाँ, लड़ेंगे, लेकिन राहुल, एक 56 इंच की छाती got scared of a 92-year-old Now let me tell you, viewers, what kind of a 56 इंच की while protesting, Tamil Nadu youth Congress workers tore pages of Times of India, mistaking it for the Time magazine in 2012. Okay. They burnt it. So they burnt it. Then let me tell you, viewers, I like the touching sentiments, and I'm not here to disparage anyone. I'm just talking about facts. So Sanjay Jha, Moody's and all that, you've thrown words around, but remember, let me also tell you that there have been scandals associated with these rating agencies. They are easy to be lobbied, etc., etc. You know this. You've been in the corporate world. Have agreed with the Hindenburg No, one second. You've been Sanjay ji. You've been in the corporate world. You've been in the corporate world. You know how these things. A couple of parties here and there, little nice caviar and champagne, and kuch bhi chhapwa do. But that's a different matter. 1 second. The market is king, and the market has answered. Okay, so the BJP has throttled the media here, and we have to now believe in the foreign hand. Now let me tell you, viewers, something. Indira Gandhi talked about the foreign hand several times. In March 1976, addressing a public rally in Calcutta.
Gandhi told of foreign critics not to interfere in India's affairs. We don't care for their criticism, whether it came from the Socialist International or any other organization. In August 1980, having returned back to power, Gandhi was back to seeing the foreign hand. She claimed to have received reports of such forces behind the riots in Moradabad and other places. Speaking at a meeting of the CWC, today, sir, your bosses go and they sign deals with the foreign hand. What changed? Indira Gandhi was, was Indira Gandhi lying about the foreign hand to cover up her deficiencies? Or is the Congress today... Which Chinese firms have funded I'm asking you. Okay. Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, the atomic energy program has run into difficulties because these NGOs, mostly I think based in the United States, don't appreciate the need of our country to increase energy supply. There are NGOs often funded from the United States and Scandinavian countries which are not fully appreciative of the development challenges that our country faces. This was in 20... has openly declared his intention to support India's democracy at the will of the Indian people. And he's funding a lot of NGOs in this country. He has got people like, I think, Harsh Mandar, Salil But Shetty, Mohandas Pai, and, aren't there ties between George Soros and Infosys also that you worked for at one point? There are no ties. There are no ties? Absolutely no ties. None? None. Okay. So no funding, no initiatives? There are no funding given by George Soros to impose a cash supply company. What will they do with George Soros? Very important. Very important clarification because this has been doing the rounds today. What has been doing the round is something called the Independent Press Foundation, where some of the founders' wives have put money, where George Soros is supposed to have put money along with them to fund people like The Wire. But that has got nothing to do with Infosys. That has got to do with individuals who were family members, the founders of Infosys, and that is in the public domain. I don't agree with them. In fact, let me tell you, I wrote to one of them, who is a funder, and told him what The Wire is doing is creating fake narratives, and that very big industrialist asked the chairman of the trustees to come and meet me. I spent 2 hours with him and asked him, how can you fund a subversive organization like The Wire and call it independent media? And he told me, yes, I agree with them, and they're going to stop the funding later. Anyway, you might have written, but I just want to make it very clear, viewers. I don't hold a brief for The Wire, but The Wire is not here to respond to these charges, and I wouldn't want The Wire to be dragged into this, Mohandas Pai. So, okay, fair enough. You made your point. You don't have to mention names. You put The Wire on a TV channel as saying they got some award and all that. Anyway, now let me make this point. Let me make this point very clearly. All right. We have seen Sanjay Jha come and spew his vitriol against the NDA government for the last 5-6 years. Has anything happened to him? Has anybody threatened him? What it is about freedom of speech in this country? No, I'll tell you who threatened him. The Congress party threatened him and they suspended him. Yes. That's a very ridiculous example. Anything, even today, that's a ridiculous example. All kind of allegations against anybody. Now, I want to make one more point, Rahul. No, but why is it ridiculous? Sanjay Jha, hang on. Why is it ridiculous? I want to ask you. You had no freedom of speech in the Congress party that sort of weeps. No, I did. I had freedom of speech. So why are you suspended? Oh, I had differences on political strategy. That's fine. That's okay. No, but why are you suspended? For having differences? That's the whole point of democracy. You can have differences. Where is the dissent? Where is the dissent? It's cool. I can tell you the Congress party had an election for a Congress president. It did not give Nadda an extension. Viewers, so there's a difference between the BJP. Let's be clear. Election that everybody has told whom to vote. Anyway, Rahul. A Congress leader called Rahul Gandhi a pappu. Rahul, he was sacked. अरे भैया जरा अदानी और मोदी जी के बारे में बात करें डॉक्टर साहब. I'm going to talk about it. डॉक्टर साहब अदानी जी और मोदी जी के बारे में बात करते हैं. अदानी मोदी भाई ट्रेंड कर रहा था. Rahul, Sanjay speaks about the market punishing Adani. It is true, but the market rewarded Adani. Why did the price go up 800% or whatever in 2 to 3 years? The market rewarded him for whatever reason. When a short seller the market takes you up, the market beats you down. He's got his own logic. Will you say when the market is going up is manipulated, when the market is coming down is not manipulated? Can you make the kind of silly arguments? Let me quickly bring in Jahangir Ali. Alexa, stop. Jahangir Ali, Soros money goes to a large number of people
who the They BJP all been believes, fought over. not through coincidence, but through deliberate design, then Yes. are funded to spread fake news, etc., etc. Could you respond to the main question here, please? Jahangir Ali. Rahul, thank you for having me on the show. Most welcome, A sir. couple of points that I would like to make. First is about Mr. Ranganathan pointed out that there are certain institutions whose functioning determine whether a country is a democracy or not, and he pointed to the Supreme Court and the Election Commission. Now we should come to Jammu and Kashmir and see how people see Election Commission, which has refused to announce dates for assembly elections in Jammu and Kashmir, and also the actions of Supreme Court, which has also not found time yet to hear the Article 370 pleas. That's number one. Number two is about what Mr. Jha One was second. also... Mr. Ali, I'm sorry I have to interrupt you, but the Prime Minister is speaking at the Global Investor Summit. Let's go straight across. का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं. री-इमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं. हालत ये थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था. इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार. और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे. हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को री-इमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया. पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था. आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है. आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं. इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है. जी, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. अब जैसे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब 40% से बढ़कर के 91% हो गई है. और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है. मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है. बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई. महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वासिम में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है. कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगीर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई है. कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो रही है. यह है री-इमेजिनेशन. मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा. आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था. 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे.
हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए हैं। ये है रीइमेजिनेशन का कमाल। फ्रेंड्स, इस समिट में शामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास, और ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी, कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा। दुर्भाग्य है जी, हमारे यहां डैम्स बनते थे लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं 6 मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी न हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? डैम बने और कैनाल ना हो। लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइंस थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पोर्ट्स थे लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट्स थे लेकिन ट्रांसमिशन लाइन काफी नहीं थी, जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी। साथियों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोज में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं।
साथियों, भारत में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज आ गई, लेकिन फिर हुआ क्या? देश के ज्यादातर शहर मेट्रो से वंचित रहे। 2014 तक, यानी आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 2014 तक हर महीने आधा किलोमीटर के आसपास ही नई मेट्रो लाइन बना करती थी। आधा किलोमीटर। 2014 के बाद मेट्रो नेटवर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुकी है। अभी भारत मेट्रो रूट लेंथ के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीनों में ही हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है, और जैसा विनीत जी ने कहा, गति और शक्ति दोनों को हमने जोड़ा है। यानी ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेड रोड तक सीमित नहीं है। जब ये हम सोचते हैं गति शक्ति, तो ये एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है, और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसी एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी में रुचि रखते होंगे, इनके लिए शायद ये जानकारी बड़े इंटरेस्टिंग रहेगी। आज गति शक्ति का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की 1600 से अधिक, 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स हैं, और कोई भी प्रपोजल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1600 लेयर से गुजर करके निर्णय करती है। हमारे एक्सप्रेस वे हो या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट रूट तय करने के लिए एआई से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति से एरिया और पीपल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका के एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इससे हम किसी एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्कूल की अवेलेबिलिटी, उसको हम मैपिंग करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, और 1600 जो पैरामीटर है उसके आधार पर, और सिर्फ डिमांड या पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर स्कूल अलॉट करने के बजाय हम जहां जरूरत है वहां स्कूल बना सकते हैं। यानी ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म, यानी मोबाइल टावर कहां लगाना उपयोगी होगा वो भी तय कर सकती है। ये अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था खड़ी की है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीइमेजिन कर रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल हमारा एविएशन सेक्टर है। यहां मौजूद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहां बरसों तक एक बहुत बड़ा एयर स्पेस डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और इस वजह से हवाई जहाजों को भारत में कहीं भी आने जाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि वो अगर डिफेंस का एयर स्पेस है तो आप वहां नहीं जा सकते, आपको घूम करके जाना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने आर्म फोर्सेस के साथ बात की। आज 128 एयर रूट्स को सिविलियन मूवमेंट के लिए भी खोला जा चुका है। इसके कारण फ्लाइट पार्ट्स छोटे हो गए, जिससे टाइम भी बच रहा है, फ्यूल भी बच रहा है, दोनों प्रकार का सेविंग में मदद मिल रही है।
और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, इस एक फैसले से लगभग 1 लाख CO2 एमिशंस भी कम हुआ है। ये होती है रीइमेजिनेशन की ताकत। साथियों, आज भारत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा है। इसका कंबाइन उदाहरण हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीते 9 वर्षों में हमने देश में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 9 वर्ष में 6 लाख, बताइए। बीते 9 वर्षों में देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कई गुना बढ़ी हैं। बीते 9 वर्षों में देश में इंटरनेट डेटा का रेट 25 गुना कम हुआ है। दुनिया के सबसे सस्ता। और इसका नतीजा क्या हुआ? साल 2012 में मेरे आने से पहले भारत ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता था, ओनली 2%, जबकि वेस्टर्न मार्केट की कंट्रीब्यूशन उस समय 75% थी। 2022 में भारत के पास ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 21% शेयर था, जबकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास ग्लोबल ट्रैफिक का 1/4 शेयर ही रह गया है। आज दुनिया की 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती है। दुनिया की 40%। ये उन लोगों को, देश के लोगों को जवाब है जो सोचते थे कि भारत के गरीब कहां से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। मुझे अभी किसी ने वीडियो भेजा था कि शादी में कोई ढोल बजा रहा था और उस पर QR कोड लगा हुआ था और वो दूल्हे पर मोबाइल फोन ऐसे घुमा करके QR कोड से उसको पैसे दे रहे थे। रीइमेजिनेशन के इस दौर में भारत के लोगों ने ऐसे लोगों की सोच को ही रिजेक्ट कर दिया है जो ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो गरीब ये कहां से करेगा। मेरे देश के गरीब की ताकत का कभी उनको अंदाज नहीं था जी, मुझे है। फ्रेंड्स, हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं,
बल्कि लगभग हर सेक्टर में था। तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया, लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ एसिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टिमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट घटाया है। समीर जी के सुझाव के वाले तो मैं अभी छूना नहीं है, हमने तो घटाया है। इसके जवाब में मैं चाहूंगा, आप आज जिस दुनिया से जुड़े हैं उसके साथ सीधा संबंध है, मैं 3 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। पहला ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। अब मुझे बताइए, टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा, उसकी क्रेडिट किसको दोगे आप? बहुत स्वाभाविक है, सरकार के खाते में जाता है। या फिर यह कहा जा सकता है कि अब लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये भी है तो भी क्रेडिट सरकार को ही जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब टैक्स पेयर को लगता है कि उसका दिया टैक्स पाई पाई जनहित में, देश हित में, जन कल्याण में, देश कल्याण में ही उपयोग होगा, तो ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए आगे आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये आज देश देख रहा है। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की ईमानदारी पर भरोसा करके वह सरकार को टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग आप पर जब तब ट्रस्ट करते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। भारत के टैक्स सिस्टम में आज जो बदलाव आया है, और वो इसी वजह से आया है। टैक्स रिटर्न्स के लिए हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रस्ट के आधार पर ही प्रयास किए। हम फेसलेस असेसमेंट के लेकर के आए। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न्स को प्रोसेस किया है। इनमें से करीब करीब 3 करोड़ रिटर्न्स 24 घंटे में प्रोसेस हुए हैं। बाकी जो रिटर्न थे वो भी कुछ ही दिन में प्रोसेस हो गए और पैसा भी रिफंड हो गया। जबकि इसी काम में पहले औसतन 90 दिन लग जाते थे और लोगों के पैसे 90 दिन पड़े रहते थे जी। आज वो घंटों में किया जाता है। कुछ साल पहले तक ये अकल्पनीय था, लेकिन इसे भी
री इमेजिनेशन की ताकत ने सच कर दिखाया है। साथियों, आज भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि है। भारत के ग्रोथ में दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने G20 की जो थीम तय की है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दुनिया की अनेक चुनौतियों का समाधान इसी मंत्र में है। साझा संकल्पों से, सबके हित की रक्षा से ही ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की विकास यात्रा से ज्यादा जुड़ें। और जब भारत की विकास यात्रा से जुड़ते हैं आप, तब भारत आपको विकास की गारंटी देता है। आज ये भारत का सामर्थ्य है। मैं इति का आभारी हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को यहां बुलाया। अखबार में जगह न मिले, लेकिन यहां तो मिल जाती है कभी कभी। और मैं सोच रहा था कि विनीत जी, समीर जी जब बोलेंगे तो रीइमेजिन के संबंध में कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय को छुआ ही नहीं। तो शायद उनके एडिटोरियल बोर्ड विषय तय करता होगा और मालिक को बताता नहीं होंगे। क्योंकि मालिक हमें बताते हैं कि जो छपता है उसमें बोले हमें ज्ञान नहीं होता, वो करते हैं। तो शायद ये ऐसा ही होता होगा। खैर साथियों, इस खट्टी मीठी बातों के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। That was Prime Minister Narendra Modi addressing the Global Business Summit organized by the Economic Times, a Times Group newspaper that brings to you the best business news. And the Prime Minister using this opportunity to actually give out details of the achievements of his government over the 9 years and the relationship of Bharosa, as he said, between the government and the taxpayers and the government, because there was honesty on both sides. That was Prime Minister Narendra Modi. On the other side, ladies and gentlemen, tonight the day has been occupied by a big controversy. There is a concerted effort by forces within and outside our country to paint a grotesque picture of Bharat. It's no secret that some are possibly not able to digest India's power status in the world today. Yes, ladies and gentlemen, there's a foreign player who has joined the ecosystem's malign India bandwagon. US billionaire and one of the wealthiest persons in the world, with the personal wealth of about $6.7 billion, approximate, according to my maths, 6 lakh crore rupees worth person, George Soros. He is in the eye of the storm for launching a direct attack on Prime Minister Narendra Modi over the Adani crisis. Revealing his game plan and calling for a change in regime, the billionaire said that he expects a democratic revival in India. He also said at the Munich Security Conference that Prime Minister Modi has been constantly silent on the Adani row and that he will soon have to answer questions from foreign investors in the parliament. Now, almost saying that the Prime Minister will have to answer in the parliament, and the parliament echoing the Adani controversy. Is there a connection? We don't know, but he went on to say that even though India might be a democracy, Modi wasn't a Democrat, and he expects democratic revival in India. Listen to this provocative statement of George Soros.
It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount. Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. Remember, ladies and gentlemen, just a few days ago, the Vice President had warned about how a sinister design is in place to run down India's growth story. But Soros' attempt for Prime Minister Modi is not an overnight development. In 2020, while addressing the World Economic Forum in Davos, Soros had said that Narendra Modi is creating a Hindu nationalist state and that it is the biggest and most frightening setback for India. But there's a sinister pattern or toolkit, I must say, to defame Bharat. International pop star Rihanna fired a tweet in 2021 asking why we aren't talking about farmers' protests in India. Taking a cue from her, environmentalist Greta Thunberg expressed solidarity with the protesting farmers. Malala Yousafzai waded into the hijab debate by fear-mongering. She asserted that Indian leaders must stop the marginalization of Muslim women. Not just this, George Soros has had a checkered history where he's accused of destabilizing several governments in several countries, from Russia to the recent example of Boris Johnson in the UK. The BJP is now splashing Congress's link to Soros in this series. The Vice President of George Soros-funded NGO OSF marched with Rahul Gandhi shoulder to shoulder during the Bharat Jodo Yatra. Salil Shetty can be seen walking beside Rahul Gandhi along with the top brass of the Grand Old Party. This has dented Congress's attempt at distancing itself from Soros' statement. The BJP has called the strike on India as an attempt to demonize democracy. Listen in. जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। उन्होंने एक फंड का ऐलान किया, $1 बिलियन का, जो वो हिंदुस्तान में और जहां जहां हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है वहां पर संचारित करेंगे ताकि हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट स्टैंड्स बिटवीन दैट वॉर एंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question on the Newshour tonight. Who's trying to sabotage India's democracy? That's the question, and that's the debate. Hashtag Soros strikes India. That's the debate on the other side. You're watching the Newshour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Guru Prakash, national spokesperson of the BJP, Ishkaran Bhandari, advocate Tushar Gupta, senior fellow Swarajya, Karthik Reddy, spokesperson of the BRS, Vivek Silas, spokesperson of the Samajwadi Party, Tehseen Poonawala, political analyst, to whom goes my first question. Tehseen Poonawala, strange friends. Strange friends from George Soros's fund walking with Rahul Gandhi, and that's the question that is being raised. How come there is so much in common between
what the Congress thinks and what George Soros has said today. And George Soros even knows that this issue will be raised in Parliament and the Prime Minister will have to answer there. What's going on? Good evening, ma'am. Thank you for having me on your show. Good evening to all my fellow panelists and to all your viewers. I don't know who is this George Soros, and I'm sure most of your viewers may or may not have heard of him. But one thing I know for a fact, George Soros is the toolkit agent of the Bharatiya Jhutha Party. Why else will the Bharatiya Jhutha Party, that did not speak about 2 women being burnt alive, come and do a press conference about some foreigner abroad speaking about democracy in India? When it comes to India, all of us on this panel are united that India comes first, perhaps except the Bharatiya Janata Party, which brought in cash in Parliament along with the left loonies to derail the nuclear deal. But I didn't call them anti-national then, I won't call them anti-national now. But this is a chal of the Bharatiya Janata Party exposing their charitra and their true chehra of trying to put the Congress and opposition in the dock. Otherwise, the most honorable Prime Minister just spoke on your channel, the most powerful man in the universe, has underneath him RBI, SEBI, ED and a serious frauds investigation. George is not going to get cash and bring into India. He will bring it via the SEBI route, via the RBI route, investigate him, arrest him, throw him in jail. Wait, there is a case going on since 2016. What happened? Nothing. They've not even been able to take the case forward because the BJP uses these people only to derail debates and to find an escape route. And this, tell the BJP spokesperson to prove my charge is wrong. It's a challenge. Guru Prakash, respond. Respond, because Tehseen Poonawalla has put you in the dock saying that George Soros is part of your toolkit. He hasn't answered any questions about why Salil Shetty was walking with Mr. Rahul Gandhi at the Bharat Jodo Yatra. Would you want to respond to the charges made by Tehseen? Thank you so much, Navika. I was patiently listening to my friend from the Congress party, Tehseen, and we have some photographs which you have also been running. Mr. Salil Shetty, Vice President of Open Society Foundation, walking with Mr. Rahul Gandhi. Now, Open Society Foundation is funded by Mr. George Soros. Rajiv Gandhi Foundation, the think tank of Congress party, the research organization of Congress party, has HRLN, Human Rights Law Network, as its partner organization, again funded by George Soros. Mr. Rahul Gandhi tweeting, India is no longer a democratic country, which is really laughable because how democratic is the Congress party, which we are all aware of. Mr. Shashi Tharoor, last I know, was the senior leader of the Congress party, met old friend George Soros, upbeat about India and curious about our neighborhood. He's far more than an investor, a concerned world citizen. So who is Mr. Tharoor, who is Mr. Rahul Gandhi, who is Mr. Salil Shetty, and what is Rajiv Gandhi Foundation? I will ask Mr. Tehseen Poonawalla, my dear friend, tonight. Apart from this, Navika, we also need to understand 2023 is a very important year, a very significant year. India is leading G20. India is leading the Shanghai Cooperation Organization. On the initiative of Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji, International Year of Millets is being celebrated by the United Nations. India has proved it was the pharmacy of the world during the COVID crisis. Be it US President Joe Biden, UK Prime Minister, French President, they have always lauded praise in favor of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. 2014, 2019, all the general elections, we have seen the 1.4 billion people of India strongly standing in support of Mr. Narendra Modi. Who is Mr. George Soros to certify? George Soros का प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें नहीं है. जब देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, कुचले सब श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं. Navika, we need to understand one thing. There is a cohort of breaking India forces, like you said, within country and outside country. They are deeply elitist, they are deeply feudalistic. They are not able to digest the fact कि गरीब का बेटा आज देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है. उनको यह बात पचती नहीं है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है. They want that old India. They are the people with old money. But let me make this very clear on your show tonight. India is going to be governed by the Constitution of India. India is going to be governed by the 1.4 billion people of India. And Mr. George Soros, Open Society, any other organization across the world
cannot dictate the terms and conditions for Indian democracy. Mr. Tehseen Poonawalla, I ask you clearly, what is the relationship between the Congress party and Mr. George Soros? ये रिश्ता क्या कहलाता है जब जॉर्ज सोरोस के पैसों से आप यात्रा करते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, आपके नेता ट्वीट करते हैं? You have all the answers, Mr. Tehseen Poonawalla, being the member exactly. of and I want to ask you, Rahul Gandhi, दूध का दूध पानी का पानी करिए. one minute. Rahul Gandhi himself has quoted in 2021 a report, We Dem Institute report, where Pakistan and Taliban ruled Afghanistan were above India in academic freedom index. This report was actually put out and sponsored by the funders of Open Society Foundation, which is George Soros' funding organization. अब उसको आप ट्वीट कर रहे हैं, आपके साथ वहां सैर हो रही है, and then you want to say this is the toolkit of the BJP. You know, Tehseen Poonawalla, once in a while, you have to make statements that at least people will believe what you're saying. I will answer both those questions. Yours I'll come to second. He showed one image. ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? Nirav Bhai Modi with Narendra Bhai Modi, and in Prime Minister Modi's house, he's saying Mehul Bhai Choksi. I've circled also Nirav Bhai Modi here. Nirav Bhai Modi with the Prime Minister. तो वही रिश्ता है जो Salil, कोई Salil is walking with Rahul Gandhi. Here तो Nirav Bhai Modi is with Prime Minister Modi. Vijay Bhai Mallya का lookout notice change हो जाता है, and Mehul Bhai Choksi is in the official residence of the Prime Minister. The Prime Minister addressing him. ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहानी घर घर की है. सुनिए सर, I am saying, I am agreeing. Soros, George Soros is funding the Congress. Congress is bad, everything. भैया आप चौकीदार हो ना? The country is in your hands ना? Stop doing press conferences. Act. 2016, did you file a case or no? What happened? High Court, it's waiting. You could not prove anything. Is the money going to come in cash? No, it's going to come by SEBI and RBI. Who's in charge? You're in charge. Please tell us what you have done. If this country you feel is so weak, we don't feel, you feel is so weak that some foreigner sitting in some corner of India can make a statement against my Prime Minister, Modi ji is my Prime Minister, and you feel, my cabinet feels this country so weak, then I feel bad for you, because my country is strong. I will defend my Prime Minister externally, but I feel bad that you are so weak that you have to attack me to save the Prime Minister. Act against Soros, but you won't because he's your man, and that is the evidence. Well, Ishkaran Bhandari, sound and fury, very little substance in the arguments made by Mr. Tehseen Poonawalla. No answers to any of the questions raised. What's the problem? You know, why can't they explain why are they tweeting, all reports put out by institutions funded by George Soros? Why is Mr. Shashi Tharoor tweeting and meeting, his old friend George Soros? Why is Mr. Rahul Gandhi tweeting all this? Why are people of the Open Society Foundation walking in the Bharat Jodo Yatra? No answers to any of that, but a lot of rhetoric. First, let me also answer that the action taken on George Soros, because that's very important. George Soros has a funding mechanism which he funds NGOs in India. In 2006, was put on a watch list. He has no ability to fund directly into India anymore. For that, the action has already been taken. He challenged that action in the High Court. He has not got relief from the High Court. So the government has taken action on his funding processes. Further, the government has also amended the FCRA Act, which was a big debate in this country where every NGO went to court and the Supreme Court held that there is no fundamental right to receive foreign funds, and the government rules are okay on that. So let us first be very clear on the facts of the debate. The action has already been taken on foreign money flowing into NGOs. Now let us come to George Soros. We have been discussing ad nauseum that George Soros has a problem with Hindu nationalistic Prime Minister. But in his 2-minute speech, and I will not focus on that too much because that is well established, in his 2-minute speech, he also talks about why India is taking oil from Russia. See, the problem was earlier, before becoming ministers, people like Mr. Tharoor were going to him and praising him.
Now he has two problems with India. First, India is following its own economic policy where every Western media has one question to ask: why are you buying the Russian oil? Whether it be Europe or be any forum that the foreign minister goes to. And our oil imports have risen from less than 1% to 27%. And Times of India report says 35,000 crore rupees saved by September. By January, it must be 50,000 rupees saved. So George Soros lobby, which is manipulating the market, which is doing short selling, openly doing short selling from Britain to India, it has two problems now. One, you are not doing economic policies which are in his favor. Second, you are a Hindu nationalist government. So what do? They put in their money for regime change, which is what they are trying to do via paid reports, which are published by the same lobby which will tweet it, go on Facebook, by funding leftist portals, by funding so-called intellectuals whose very reason of existence is to try to change the democratic process in India. And in his last few words, he gives the game away. He says, I think there will be a democratic change. So when Mani Shankar Iyer goes to Pakistan, he wants Pakistan to do democratic change. George Soros openly says, bring a democratic change. Unfortunately, they will fail. The people of India, including Tehseen, including me, including all of us, by our majority, will decide the Prime Minister of India, and that is what is a functioning democracy. Well, but the question is, and I want to ask this to Mr. Vivek Silas, जो जॉर्ज सोरोस का दर्द है, मतलब लगभग वही दर्द ऑपोजिशन पार्टीज को भी हो रहा है. यू नो, प्रवीण चक्रवर्ती राहुल गांधी के बड़े करीबी दोस्त हैं. वो कहते हैं मोदी में डॉज आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अडानी इन पार्लियामेंट एंड इन इंडिया, बट ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स जॉर्ज सोरोस. आई वांट टू आस्क यू, ये क्या इकोसिस्टम है कि जो भाषा वो बोलते हैं आप भी वही भाषा बोलते हैं? ये कौन सा दर्द है? कौन सा दर्द है? एंड जॉर्ज सोरोस, short seller, he has allegations about, you know, debauing the pound sterling, about Bank of England in a few decades ago. The same person now talks about Hindenburg, again a short seller agency, and the same dard comes to the opposition parties. ये कैसा दर्द है? And what kind of medicines are you looking from Mr. George Soros? कौन सा बैंडेड, कौन सी दवाई चाहिए आपको? इतना दर्द क्यों हो रहा है? Yes, very good evening to you, Navika ji. What Mr. Guru Prakash right now said, that who is George Soros? As you said in your report, that the George Soros is a man of $6.5 billion. He could be a driver of Mr. Adani, who is a man of $140 billion, you know. And what in the last debate, when we were debating on the other channel, what Mr. Sushant Sareen said, it's a failure of the central government, definitely. Because what is the FCRA doing? What is the SEBI doing? And what is the RBI doing? How is the money coming down to India? That is the question. Who's there to stop it? It's there for the Home Ministry and the Finance Ministry, that is controlled by the central government. And the other report that you showed in your previous show, that Mr. Honorable Jagdeep Dhankar, the Vice President of India, said we have to be alert. Ma'am, we don't have to be alert. We have to act. As what Tehseen said in 2016, there was a case against him. What happened to the case? Why don't you ban him? How is the funding coming down to India? He could be a toolkit of anyone. He could be a toolkit of Congress. He could be a toolkit of the Bharatiya Janata Party as well. No one knows. Definitely not. The question is not, and people like George Soros don't have the guts to hamper the Indian democracy at any stretch of imagination. India is a strong nation. India is emerging, no doubt. Fine, done. But people like that coming and saying something against our Prime Minister, and that we can hamper, we can, Well, Tushar Gupta, I want to ask you, do you believe these attempts by the opposition to distance themselves from George Soros? You know, they say on record that we have nothing to do with him, government should take action. But pictures say otherwise, connections say otherwise. What's going on? Good evening, Navika. You know, everyone who was anticipating a foreign hand during the Adani crisis has been validated by the
confession of George Soros. Nevertheless, let's connect some dots, Navika. The Congress says that any individual participating in the Bharat Jodo Yatra has no relation to Rahul Gandhi or the Congress party. Let's take it on face value for the sake of argument. But it was Rahul Gandhi in an interview to a Harvard professor who remarked that the Western powers should interfere in India's democratic process because the institutions apparently are sold out, from media to judiciary. We had the Adani crisis, Navika. For a week, the stock price was falling. And what was the opposition of this country doing? They were trying to incite people, selling this lie that the LIC or the SBI might become insolvent because of their exposure to Adani. That retail investor money was at risk. Irrespective of the statements and the declarations the LIC and SBI came out with, the opposition was more interested in selling hysteria rather than questioning self-proclaimed short sellers, which was Hindenburg, questioning the agencies that were downgrading Adani, questioning their credibility. So, it's very simple here to connect the dots and to see where the Congress is today. Nevertheless, the Congress has an opportunity here to distance itself from the comments of George Soros, but instead they're attacking the BJP, which honestly feels very odd. You want to fight the BJP on merit? You can. You want to fight them on policy? You can. But to use a crisis to further your political agenda, a crisis that has a foreign hand, it's being validated now. That doesn't sound right, Navika. Well, so let me ask Mr. Karthik Reddy. Karthik Reddy, the fact of the matter is concerns being raised on whatever, comes to the mind of the opposition, asking questions, absolutely within your right. But should the opposition fall into a trap, and the trap today that has been exposed by the words of Mr. George Soros? It's a limited question I'm asking, because the kind of concern that opposition parties picked up and just ran with it, instead of bringing some sanity to the markets, actually made more wealth of Indian investors go down the drain, didn't believe any institution in India. And today, somehow the language of George Soros and the questions and concerns of the opposition almost sound, similar. I want to ask you, Karthik Reddy, are we playing into a trap or into somebody's hands or some agenda that is clearly wanting to keep India down? Hello, Navika ji. Good evening. Let me sir. tell you that we are not that gullible and naive. We Indians have come a long way and we are smart enough. We have seen enough of the world to realize the world is not our friend. At the onset, let me use your channel to congratulate our Honorable Chief Minister. Today is happy birthday, so through your channel I want to wish him well and all the health. Navika ji, if you want to call it a trap, what George Soros has said, let's divide it into two parts. First part, any individual, any institution, any company of foreign origin has no business to say or to get involved in Indian polity, its internal matters, in our politics, with our Prime Minister. This is our doing, this is our own headache, this is our internal matter. No foreigner has any business to say anything regarding our internal matters. And everything said and done, Navika, in the last few times I was on your channel, I kind of hinted that the whole world is looking at us. We are becoming a butt of jokes. The whole world is trying to gauge us on the lines of Adani. Navika ji, the trap that you are talking about, that George Soros today mentioned Adani, but let me tell you, this is not the first time or the first week that we as opposition were talking about Adani. From the time Modi ji has become the Prime Minister, the opposition has been crying about Adani, about his meteoric rise in his wealth, his involvement in a number of businesses in India. This is not new. This is not a trap that anybody has set for us to fall. Adani is hand in glove with Modi, and that is what we have always been saying. And now if I say this, there are certain friends from the BJP who says, now look, the Supreme Court has taken cognizance. Navika ji, the Supreme Court is not run by the Prime Minister. All the institutes are right now mute.
I don't know when the Prime Minister will come out and speak about Adani in the Parliament, in the press meet. Not only India, Navika ji, the whole world is waiting right now. Guru Prakash, the buck again comes back to the government's doorstep, that cases going on against NGOs related to George Soros, no progress has been made, and all regulating institutions are under the government. Why are they not doing something? If you know there is a foreign conspiracy that's going on to destabilize India, what's the government doing? Navika ji, we must understand a couple of things first. A lot of my friends from different political parties, and it has now sort of become a rhetoric on attacking the institutional integrity. We have judiciary, we have executive, we have legislature. The problem is that when any institution goes against your will, आप election हार जाते हैं, Election Commission of India खराब है. There is a judgment against you in the Supreme Court, the Supreme Court is compromised. This mindset is not going to work. Our Election Commission of India is an independent, autonomous constitutional body. It has MOU with United Nations as well. It has credibility across the world. Supreme Court, you have time and again raised question. Now, Navika ji, coming to your question, that what have we done? Mr. Harsh Mandar, the raid on his campus. Now, who is Mr. Harsh Mandar? Ex-member of the National Advisory Council. Now, what was National Advisory Council? It was the government main agency, the topmost decision-making body during the UPA government. Now, the purported link between Mr. Harsh Mandar and George Soros is everybody to establish. You look at the point of contention by Mr. George Soros. He did not like the CEA. He did not like the abrogation of Article 370. George Soros, his institution, his organization is clearly in cahoots with the Congress party. Why is there such ideological promiscuity between the two of them? Article 370 George Soros ko bhi chahiye. So Article 370. I understand that. I understand that, Mr. Guru Prakash, but why is the government not acting? Why is the government not acting? What were you waiting for? Yes. Navika ji, we must understand that the government has initiated action, the Supreme Court has also initiated action. We don't need to give our every answer on this show, but we have to understand the international conspiracy, the international stakeholders, the international Breaking India Brigade must also be exposed here, and their clear-cut link with the Congress party as well. The same Congress party, they say, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिनके खिलाफ, जिनके आपने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं. You are making an alliance with the same forces. Respond, Tehseen Poonawala, and let me also raise two other questions. Let me ask you: have there not been close links between George Soros's, foundation and the work that they do, and a former Congress Prime Minister of this country? And US media watchdog, the Media Research Center, has also stated that George Soros and his companies enjoy a lot of good relations with media companies, including the New York Times, the Washington Post, etc., etc. The same media outlets which regularly try and bring down the government or write against the government in India. So two aspects to this. Number one, which political party, quiz for your viewers, retrospectively amended the FEMA and FCRA laws so that Chanda can come into them? The Bharatiya Janata Party. And ask the late Motilal Vora, who went and made that request. Of course, it's a dubious decision taken. It was, right? But, who was the Prime Minister? The fingers in the pie. The fingers in the pie. I am saying the fingers in the pie were the Congress and the BJP both. Okay. I am saying the Congress is bad. So don't say half truths. I am not saying half truths, but allow me to speak. I am saying the Congress is bad. It's misread. It's misruled this country. Everything, but because Congress is bad, the current most honorable Prime Minister retrospectively amends the rules so that Chanda can come into his political party. वाह भाई वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से किसके पास पैसे आते हैं? छोड़िए इन बातों को, इससे दिक्कत होगी. Let's come to the more substantive issues. Tushar raised a very important point. He said Rahul Gandhi asked for foreign interference. Rahul Gandhi said, and I quote, India and USA should combine forces to promote human freedom, democracy and rule of people. How is this bad? I think why India and US works is because we are tolerant systems. You find this bad?
the same government that pats itself on the back for one Philip Kotler award that it gets somewhere in here. I'm again saying we don't want selective quoting, Tushar Gupta, selective quoting. But acting those who are hurting our country, why are they not acting? That's the question. Selective quoting by Tehseen Poonawala, Tushar. Navika, you know, I admire the opposition of this country, especially the Congress, that have been raising their concerns against the Adani enterprises since 2014, since Modi took over. And at the same time, having their state governments allow projects by the Adani enterprises, one of them being the biggest solar park in the country in Rajasthan. Yeah. Along with Mamata Banerjee and other allies of the opposition hosting Adani regularly. Yeah. Nevertheless, it's one of those evenings, Navika, where I want to give Congress all the benefit of doubt. Today, George Soros made a remark about India. It was about Modi, but it was also about India. माना कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस का देश तो है. बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी. What was stopping the Congress from doing a press conference, coming out and saying that we disagree, we discard the remarks made by a foreign individual which are against Indian interest. While we fight the BJP on policy merit, we would not be audience to such remarks by a foreign individual. Well put by Tushar Gupta. Considering economic and political they just merely put out a tweet. Jairam Pawan did it, and I'm telling you, Jairam Ramesh did it, Pawan Khera did it. He said we don't agree with this, but I am still saying they put out a tweet, George not a press conference. But the fact of the matter is, there is an uncanny similarity that comes. I'm running out of time, Tushar. Uncanny similarity between what George Soros has said and what has been raised by several within India. Now, what are the connections is for the government to find out, and what action will it take? Well, we'll wait and watch. Thank you very much to my guests joining me on debate number 1. On the other side, ladies and gentlemen, it's all over for Uddhav Thackeray for now. That's what it seems like. Because after losing Shiv Sena's party and Satta, today came the final blow for the Uddhav Thackeray faction. Piercing Uddhav Thackeray's hope, the poll panel armed the Shinde faction with the pehchan of Bala Saheb's Shiv Sena, that is the symbol bow and arrow, which the Election Commission's ruling has reduced Uddhav Thackeray to a mere paper tiger, calling it a win for ideology of Bala Saheb, who is revered as Hindu Hriday Samrat. A jubilant Eknath Shinde, Chief Minister of Maharashtra, said that truth is finally out. While Deputy Chief Minister Fadnavis congratulated and branded Shinde as the biggest Bhakt of Bala Saheb Thackeray, take a look at what transpired earlier this evening. चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं. ये लोकशाही का विजय है. हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है. और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है. और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद. देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है. और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है. इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी की उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा. आगामी निवडणुकांमध्ये याचा फायदा होईल या निकालाचा? 100% फायदा होईल. कारण आतापर्यंत एक संभ्रम होता की खरी शिवसेना कोणाची, आणि म्हणून अनेक लोक, विशेषतः अनेक शिवसैनिक. Well, obviously Uddhav Thackeray disappointed with the decision, and probably courts are the next destination for this entire battle. But joining me on the debate tonight, Shiv Sena, spokesperson of the BJP, Tehseen Poonawala, political analyst, Sameer Desai, leader of the Shiv Sena Uddhav camp, and Krishna Hegde, spokesperson of the Shiv Sena, the real Shiv Sena, which today gets the bow and arrow. Sameer Desai,
My question to you, it's all over. It's now the decision of the Election Commission. Does it really show a tectonic shift in the politics of Maharashtra? Is the Uddhav Thackeray camp, which once called itself the real Shiv Sena, is it today facing the reality? Navika, let me primarily tell you that today's verdict, today's order of the Election Commission is unfortunate, bad in law, draconian, but at the same time expected. Navika, fortunately for us, there is a much larger court in the democratic setup of this nation, and that is the court of the public. We have time and again said, and my leader today has openly thrown a challenge to the incumbent government, that this incumbent government has been successful in hijacking the name. Although this matter will be challenged in the court of law, and we are very optimistic that the court of law will take the right course. However, for the time being, let us presume that they have succeeded in hijacking this Shiv Sena name, the symbol, our MLAs, the MPs. They have succeeded in getting Modi ji twice to Mumbai in the last 2 months. I, as an activist of the party and as a supporter of Uddhav Balasaheb Thackeray, challenge the incumbent government to at least ensure and declare the dates of at least the Mumbai Municipal Corporation tomorrow or in the days to come. This is the line, this is what the Mumbaikars are waiting for, and in case the incumbent government was waiting for all this to happen, well, they have so let me ask Mr. Krishna Hegde. Mr. Krishna Hegde, now that you get the symbol, is the announcement on the municipal polls going to be next, number one? And number two, you're being accused of hijacking everything. How do you respond to that charge of hijack, despite a long reasoned out judgment that has come through the quasi-judicial hearings that the Election Commission has held? Navika ji, let me first tell you that this is the victory of the ideology of Hindu Hridaya Samrat Balasaheb Thackeray ji. It is also a victory for the ideology of Dharamveer, Karamveer, Anand Dighe ji. It is actually a victory for the people of Maharashtra, who in 2019 gave a mandate to the combined BJP Shiv Sena combined and voted them to power. It is then that Uddhavji decided to join hands with the NCP and the Congress, which his late father, Hindu Hridaya Samrat Balasaheb Thackeray ji said कि अगर मुझे कभी भी कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा. These were his exact words. But Uddhavji, I don't know for what reason, did this and joined up with the Shiv Sena, with the NCP and the Congress. However, Eknath Shinde ji and all the other MPs and MLAs prevailed upon him to reconsider his decision and move out of the Mahavikas Aghadi alliance, which he did not. And however, after that, Eknath Shinde ji took a bold step and he moved out with 40 MLAs, total 50 MLAs, 13 out of the 18 MPs, corporators, bold step after 2.5 years. 8 to 10 state presidents. And how can you call that a hijack? Exactly my question, Samir Desai. They have more MLAs, they have more MPs, they've got the symbol, they are running the government, and it's all happened on the floor of the House. How do you call this a hijack? Would you want to explain? Are you a bad loser? Am I to respond to this? Yes, sir. Navika, you remember Uddhavji telling time and again that when such a matter of such importance and such magnitude is pending before the Supreme Court of the country, and that too before the constitutional bench, when it is a matter of constitutional interpretation, he had requested the Election Commission, asking them to refrain till the time this matter is disposed of by the Supreme Court. Navika, going into the legalities of it, what happens tomorrow in case if these 16 members are decided by the court as ineligible? What happens to this, then the decision of the Election Commission in wake of the Supreme Court order then?
So I believe, and not only me, as I said, the people of Maharashtra believe that this was a well-hatched conspiracy. I give them the credit to hatching this conspiracy so well to this an extent. I give them the credit. But as I said, this is just the beginning. The end, the result of this will be in the court of the people, and that is exactly, I'm not going into the legalities of it. Because if I go into the legalities of it, if I was not heard by the Election Commission, I'm certainly not going to be heard on Times Now. Well, I'm not a court of law, and I don't pretend to be a judge hearing your case. But Tuhin Sena, how do you respond? Yeah. Questions on the Election Commission are pretty regular these days. But the fact of the matter is, if the matter is pending before the Supreme Court, what was the hurry? Good evening, Navika ji. First of all, this is a victory for the people of Maharashtra and all those who betrayed Balasaheb's ideals by allying with his enemies have today lost their namo nishan, as they say. Now, when they talk about courts, see, I think, this is the only face-saving device they have. There is no, it simply doesn't have a case. Even today in its ruling, in its 78-page ruling, the Election Commission has very clearly mentioned precedents based on which the current ruling has been arrived at. And they include cases of LJP in a similar situation. They include cases related to AIADMK. So first, Uddhav Thackeray should at least read the report before carrying out his rhetoric. Secondly, I think in the very first place, it is very clear that it was Uddhav Thackeray who had betrayed the mandate by going against Balasaheb's ideals by allying with his political foes. Today, if 80% of his MLAs have restored the original party, I think it is a victory for both BJP and the original Shiv Sena, which is anyway today regarded as Balasaheb Shiv Sena. Well, so I want to bring Tehseen Poonawalla to your notice what the Election Commission has said in this matter. The Election Commission has said that the current constitution of Shiv Sena is undemocratic. It has been mutilated to undemocratically appoint people from a coterie as office bearers without any election. Such party structures fail to inspire confidence. EC has also stated that the constitution of Shiv Sena was amended in 2018 and not even submitted to the Election Commission, which they should have. Amendments had undone the act of introducing democratic norms in the party constitution of 1999 and brought by late Balasaheb Thackeray at the insistence of the commission. Now, they changed everything, did it surreptitiously, and today calling the Election Commission names. Okay. So this happened in 2018, but the present Honorable Chief Minister of Maharashtra, while enjoying fruits of power for 2.5 years, did not deem it fit to go to the Election Commission or to a court of law to challenge it. Who's challenged it? Uddhav Thackeray ji in a court of law in the Supreme Court. It's before a constitutional bench of 7. And what Samir is saying is absolutely right. When tomorrow the constitutional bench says, what is the matter before the constitutional bench? That Eknath Shinde ji and the rest of the Shiv Sena Sainiks have violated the 10th schedule of the constitution. Now let's say this Honorable Supreme Court constitutional bench says, yes, they violated it. That means this party is not split. That means Eknath Shinde is a rebel. Now when the Supreme Court says it, what happens to this decision? Therefore, one constitutional body should not interfere when the highest court of our land is hearing the matter. But then of a let me constitutional give the other reasoning that the domain of the Election Commission really is the, it's their function to give party symbols. And if there is an election coming and matters are still going on in the Supreme Court, should all democratic activity come to a standstill? Well, there are many questions. The matters are definitely headed to the courts of law. What happens there? Difficult to say. But if you look at this order of the Election Commission today, then there's a tectonic shift, at least for now, as far as Maharashtra politics is concerned. Eknath Shinde, the real Shiv Sena with the bow and arrow, but Uddhav Thackeray, the son of Balasaheb Thackeray, not the real Shiv Sena, not enough MPs or MLAs to support him. And that's how democracy functions. What do you do? Let's keep an eye on that story, which is definitely developing. But thank you very much for joining me on the Newshour tonight. To all my panelists, and thank you viewers for watching and joining me
on the News Hour at 9. Good night, be safe, have a safe week. हमारे साथ मौजूद हैं मोहुल, who's founder and CEO of Matter. Thank you for joining us. Thank you. So Mohul, we've already seen this bike. I still don't know what you guys going to call it right now, but hopefully, we're going to know about it in a couple of months, I believe, and more details that we already know about specifications and what you are offering with this bike. But उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं. So इस बाइक को लेकर थोड़ा टाइमलाइन, इफ यू कैन एक्सप्लेन किस तरह का टाइमलाइन रहने वाला है एंड कब इसका ऑफिशियली लॉन्च आप करने वाले हैं? Definitely. So first thing is at the Auto Expo we have also showcased the 6 kilowatt version of the bike. So at launch we had a 5 kilowatt version. Now we also have a 6 kilowatt version of the bike. And in terms of timeline, in the next 30 days we will be giving out the spec variants and pricing to the larger market. We will be opening up bookings for the Matter motorbike this quarter, and deliveries summer में शुरू हो जाने वाली है. शुरू हो जाएंगी. So एक चीज़ जो बहुत ही टेक्नोलॉजी का हूँ इंटरेस्टिंग है इस बाइक के बारे में, इसमें गियर है. Yep. इलेक्ट्रिक बाइक होने के साथ साथ इसमें वो आइस वाला आपने एसेंस और बहुत बड़ा एसेंस इसमें बचा के रखा है. सो वो कैसे आपने उस पर काम किया एंड हाउ डिड यू थॉट अबाउट दिस कि ये अगर हम इसमें इंक्लूड कर पाते हैं गियर शिफ्ट वाला पैटर्न, सो वो कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ So when we in 2019 when we were starting out, we spoke to a lot of consumers कि electric bike क्यों नहीं खरीदते. In 2019 there were only a handful of players who were giving motorcycles as a product, and what we realized is that motorcycling is emotion driven. You name your bike, you work with it, you control it, you become one with your bike. And from there the common theme came, control नहीं मिल रहा, feel नहीं आ रही. And obviously once we started translating कि हमें क्या सुनाई दे रहा है और कस्टमर को क्या चाहिए, and we've spoken to over 500 customers on this. Clear indication, gear तो चाहिए. And that's when we said कि let's make something that the consumers truly want. ऐसा नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है उसी को वापस पैकेज करके दे देते हैं. Let's make it. तो वहाँ से when the journey started, we had to make our own motors. We had to make the gearboxes, the batteries, the electronics, the entire vehicle from scratch. And nobody would have, I believe nobody would have thought of जितने भी EVs, two wheelers इंडिया में अब आ रहे हैं, ये गियर वाला किसी ने, I think we are the first in India to have actually put gears on a electric bike or an electric two wheeler. So I mean ये एक चीज़ है जो स्टैंड आउट करती है मैटर को बाकी सभी EVs या और भी जो ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में. इसके अलावा आई हैव सीन वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट खड़ा है एंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट ओवर देयर एंड दिस वन आई रियली लव इट राइट नाउ. आई होप ये जिस शेप में है एटलीस्ट 70-80% इसका ये शेप वैसे का ही जब फाइनली प्रोडक्शन वर्जन में देखने को मिलेगा. डेफिनेटली. सो इन दोनों को लेके आपका क्या प्लान है एंड व्हाट उसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है? यू कैन प्लीज. So definitely. So while the Matter motorbike sits in the 150-200 cc range of vehicle, we wanted to, in line with our vision of accelerating India to electric, we also wanted to create mass market products, and that is where, let's call it the sub 150 cc, because exact cc to electric powertrain. Right now you're calling this EXC concept. This is the concept EXC. So the concept EXC and the concept UT both are built on the same platform. Both come with swappable batteries. Both can be so both are very flexible platforms which allow you to accessorize it a lot, change it to the way which is suited to you as a consumer best. Both of them are connected platforms. In that sense, they are very, I'll call them younger siblings of the Matter motorbike. But coming down to the 2 men have been burnt alive after alleged abduction over cow smuggling allegation in Rajasthan's Bharatpur.
kin of the alleged cow smuggler demand justice, call for ban against Bajrang Dal, citing the Arait outfit's involvement. Meanwhile, the police forms the special teams to nab the accused. Cops say deceased Junaid has 5 cases pertaining to cow smuggling against him. आ चुका है पोको X5 Pro का बॉक्स टेबल पे। अब इसको जल्दी से करेंगे अनबॉक्स। ब्लैक और येलो कलर का ये बॉक्स है, जो ज्यादातर पोको के स्मार्टफोन पे आपको येलो कलर, जो इसका सिग्नेचर कलर है, वो दिखाई देगा। Sometimes it is really tricky to take the tapes off, so let me try it with my nails. One tape down successfully. Guys, ये जो फीलिंग है ना अनबॉक्स करने वाली, ये काफी ही मजेदार लगती है। जब भी आप कोई नया गैजेट अनबॉक्स करते हैं तो मजा तो आता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, बॉक्स के पीछे की तरफ बहुत सारे डिटेल्स लिखे हैं, बॉक्स के बारे में फीचर्स लिखे हैं, वो दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे जब फोन हाथ में आ जाएगा। Inside the box you get this little paper box as well, जिसमें ज्यादातर पेपर वर्क और प्रोटेक्टिव केस ही होता है। Like I said, वही मिला है हमको। यहाँ पर एक छोटा सा मैनुअल टाइप है। यहाँ पर फोन पे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस, और साथ में सिम इजेक्टर टूल, विच इज वेरी बेसिक। अब मुझे बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है हमारा डिवाइस, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। उफ, very vibrant and peppy yellow color. Just like the box, the smartphone also boasts the combination of black, or call it dark gray, along with yellow. और कॉम्प्लीमेंटिंग डिजाइन आपको फ्रेम्स पर भी दिखेगा। जो कलर आपको यहाँ कैमरा मॉड्यूल पर दिख रहा है, पीछे ये जो पैच पर दिख रहा है, वही आपको उसी कलर का फ्रेम दिखाई देगा with yellow accents. वेट की बात करें तो अच्छा है, लाइट वेट है, और यहाँ पे जो येलो है, दिस इज लिटिल बिट डल, नॉट एज वाइब्रेंट एज द बॉक्स और प्रॉपर येलो। वैसे तो मैट फिनिशिंग है, लेकिन ये जो कलर है, इसके अंदर हल्का सा ग्लिटर आपको दिखाई देता है। फ्लैशी नहीं है, अच्छा है। इसको साइड में रखते हैं, अभी ऑन भी करेंगे और उसके बाद स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं और क्या आपको बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। You also get a 67 watt charging brick. I really liked how they have written 67 watt here. बहुत ही बढ़िया फॉन्ट लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने को मिला, वरना ज्यादातर यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं 67 और 80। तो ये जो इसने हल्का सा छोटा सा अटेम्प्ट किया है विद द डिजाइन, आई रियली लाइक। साथ में आपको मिलता है टाइप सी केबल विद ऑरेंज एक्सेंट्स। Good evening and welcome. You are watching the Newshour Agenda. I am Padmaja Joshi. Today there was quite a storm over speech of billionaire George Soros at the Munich Security Conference, which almost sounded like a new imperialist dream. A weakening of the sitting Prime Minister of India, which Mr. Soros said would enable institutional reforms and democratic revival. Of course, conveniently forgetting that Mr. Modi is the democratically elected Prime Minister, which has been ratified by various institutions of India, which last we heard was still a sovereign country. Anyway, after Mr. Soros's utterances, the Indian government said that this was nothing more than a barely veiled regime change operation by a man who has faced criticism in several countries in the recent past for charges as varied as economic terrorism and meddling in their internal affairs. Now, all of this would have remained a rich billionaire's pipe dream versus a sovereign country's stern reminder to him. But then, things got very hairy and political. Just like parties like the Congress distanced themselves from Soros's call to topple Modi, came this picture from the Bharat Jodo Yatra, where Vice President of Soros's Open Society Foundation was seen not just in the Bharat Jodo Yatra, but right next to Rahul Gandhi, having a pretty long conversation with him, along with several other leaders of the Karnataka Congress, leading the BJP to ask, is the Congress now willing to hobnob with regime change enthusiasts in the name of their opposition to Modi?
You're watching the News Hour at 10. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Vivek Srivastav, political analyst. The first question naturally is to you, Mr. Qamar Zaman Chaudhary, leader of the Congress. What was this man doing at the Bharat Jodo Yatra? वो देश को तोड़ना चाहते हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो में. Problem now, this thing, Padmaja, is that, you know, any criticism of the government of the Modi or his cabinet ministers or his policies, you immediately twist it as an anti-India narrative. Now, as within the Congress party, have you ever said that we need a George Soros to highlight the problems that India is facing? First of all, hold on a second, sir. Who are you saying criticize the Modi government and its ministers? Everyone has the right to criticize. First, let me start by asking you what George Soros said. Do you think it is criticism? Because he did not say that, oh, Mr. Modi is doing a bad job or Smriti Irani is not doing a good job. He said, and I quote, India is a democracy, Modi is no Democrat. Modi Adani fate intertwined. A weakened Modi will open door to institutional reforms. What are these institutional reforms that Mr. Soros wants to implement in India? Which institutional reforms is he going to have? And what is this democratic revival that he is dreaming of? Not he is dreaming, entire of India is dreaming of a democratic revival right now. Padmaja, you just need to come out of your slumber and see what exactly is happening all over the world. India has made itself a fool in the eyes of the world. Do you think all those other institutions like the Credit Suisse, Morgan Stanley, Citibank, or all those countries that has ganged up during the Nupur Sharma issue, they are making a mockery of India? Just a second. So let me just pause you for a second and ask you very clearly. Are you in principle agreeing with what George Soros said? I said, whatever George, if you debate this in a two-way, if you say that I am debating on the angle of George Soros, no, I am not with George Soros. But if you debate it subjectively to what George Soros says, do you agree with George Soros? Yes or no? Do you agree with what he said? Yes or no? There can only be one. Of course, I agree. You agree with him? Yes. Do I need to repeat it 1,000 times? Are you agreeing as a congressman or in your private capacity? Has happened in India. Are you agreeing as a congressman or in your private capacity? No, entire India is agreeing to the points raised by George Soros. Though we do not need a George Soros to highlight the problems India is facing as a democracy. Sir, don't speak for entire India because we do not need your certificate for entire India agreeing with a man who has been called an economic terrorist. Economic terrorist. A man who went and informed on Jews who were being persecuted during the Holocaust. So we do not need your certificate about entire India agreeing with a man like that, who has led 3 countries to the verge of bankruptcy. We do not need his certificate, and we definitely not need your certificate about who agrees with him or not. Sanju Verma, quick first rebuttal to Qamar Zaman Chaudhary is saying the sentiment is reflected by everyone in India of George Soros. You know, Qamar Zaman Chaudhary is not even the official spokesperson of the Congress. Be that as it may, the Congress has been vanquished in Lok Sabha 2014 and Lok Sabha 2019. So for the unofficial Congress Darbari to sit here and give a bhashan to the BJP or to the Modi government on democracy is a bit too rich. खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो हिंदी की कहावत है आज मुझे याद आ रही है. And let me tell you, strong words were used, and I will not use derogatory words, but I need to set the record straight. For everyone who's today clapping for George Soros, let us be very clear that George Soros has been banned in his own country, Hungary, where he was born. In 2018, Hungary passed the Go Back George Soros law because he wanted to give protection to illegal immigrants in Hungary. Now, coming to the other most important point, people who say that, oh, India's democracy is under threat, this is the same law which will believe an economic war criminal, a terrorist,
a financial terrorist like George Soros. They will not believe Rishi Sunak, the Prime Minister of Great Britain. They will not believe Joe Biden, the American president. They will not believe Emmanuel Macron, the French, counterpart of Narendra Modi. All these three gentlemen said the $85 billion deal between Air India, Airbus and Boeing is one of the largest deals in civil aviation history. Everybody is applauding the Modi government, and these people, a bunch of losers, are sitting here and waxing eloquent about democracy खतरे में है. अरे कुछ तो शर्म करिए. निर्मला सीतारमन was right. डेटोल से मुंह साफ करके आना चाहिए आप लोगों को डिबेट में आने से पहले. Okay, Vivek Srivastava, opening comment. The whole world is praising. Today, France and the United States are thanking India for creating jobs in their countries, are talking about economic revival, are talking about how India is the hope for the future. But you need a George Soros' certificate about how India needs reform. Great. Who would you rather believe? Yes. Okay, now see first of all, there is no reason for the spokesperson of the ruling party, which is in government right now, to be so frustrated, so angry. It seems that she is very disturbed by what is happening in the nation today. Well, yes, we don't need a George Soros to tell India. I agree with you. I mean, I'm not in favor of any capitalist businessman sitting across in Europe and America and trying to teach India what we should. However, now that we are debating about it and we are debating about the issues, I mean, why didn't the Prime Minister of India give a statement on Adani when he was speaking in the parliament? He is my Prime Minister also. If he feels that the opposition is asking some questions, the media is questioning him, it was his duty to speak, and he did not speak. Number one. And that gave a very wrong picture about us. It is not a question of George Soros. It is the question of my Prime Minister not making an official statement when he should have. There are no answers to it. Number two, BBC comes, makes a documentary. You should have ignored it if you think it is not right. You went out of the way. You banned it up. Then there are income tax raids. Sir, so, today this is about George Soros. Hold on a second. Let's just keep to this thing. Let's keep to the topic. You are saying nobody needs George Soros's either certificate or validation. And in fact, he is somebody who has been discredited in the past. So again, I come back to the point. What is anyone doing hobnobbing with people from George Soros' foundation? If he is a persona non grata, if he is a person who has been thrown out of various countries, if he is a person who in fact has been called out by countries like Malaysia for things that they would rather not tell the people, then why is the vice president of that same organization walking in Bharat Jodo Yatra? Why would you hobnob with such people? These are people who've made very clear their intention. I'll tell you. I'll be very clear. Padmaja, see, it's like this. It's a free world, number one. When I say that don't listen to a particular John Soros, then also please do free not... world में दाऊद इब्राहिम के साथ थोड़ी ना भारत जोड़ो करने लगेंगे भाई. ये क्या बात हुई free world? And say, हमारा Prime Minister विश्व गुरु बन गया. Then it should be either ways. Free world में कल Ayman al-Zawahiri will be parachuting somewhere and you will say free world. Then you have no right to sit. नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन पैराशूटिंग. आप एक तरफ कह रहे हैं साहब एयरबस की डील हो गई, आप जा रहे हैं उनका माल खरीदने के लिए, आप उनको पैसे दे रहे हैं तो वो तो खुश होंगे ही. I mean, who is going to finance the deal? Which bank? Which is हमारी वैक्सीन बाहर जाती है, लोग खुश होते हैं, आप कहते हैं नो बिग डील. उनका सामान हम खरीदते हैं, वो थैंक यू कहते हैं, आप कहते हैं नो बिग डील. What is a big deal for you? George Soros is a big deal. Everything else is immaterial. No. Absolutely not. Absolutely not. But why are the answers not coming from my Prime Minister and my government? That is the point. Sir, okay. Why are you not one second. Why are the answers not coming? You know, that has been debated ad nauseum. Let me ask this question to somebody to whom it is more relevant perhaps, Kamar Zaman Chaudhary. What was the Vice President of Open Society doing in Bharat Jodo Yatra? Especially given the fact that Open Society's intention and thoughts about India are not hidden. As far back as 2020, George Soros made a $1 billion pledge saying that I want to fight nationalists and climate change, twin challenges that threaten survival of civilization. Modi is creating a Hindu nationalist state and threatening to deprive millions of Muslims of citizenship. So I am going to start a global university to fight him.
2020, this man says, I will give $1 billion to bring down Modi. 2023, his vice president is there in Bharat Jodo. Why? Okay. 2018 onwards, Narendra Modi government has been investigating Open Society Foundation. It's 2022. In the meantime, Bharat Jodo Yatra happened. The vice president of the so-called Open Society Foundation walked with Rahul Gandhi, as was Harsh Mandar, as was many other personalities of India walked along with him. So I don't see any problem if somebody walks with Rahul Gandhi. It was for a common cause to defeat the fascist forces that is engulfed the country. Point number one. Point number two. Common cause was to defeat Modi. Bharat Jodo Yatra to expel hate from the country. Okay, so you want to make common cause with George Soros. I think you're really doing yourself no favor, sir, where you are saying that as far as the objective is the same, doesn't matter who you are making common cause with. Sanju Verma. Thank you. Padmaja, आज मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई that Vivek Srivastava at least he admitted कि नरेंद्र मोदी इनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं. So far so good. Let me tell you, you said BJP spokesperson is frustrated. मतलब आप पद्मजा जोशी के शो पर बैठकर प्रधानमंत्री को रोज 10 बजे गालियां देते हैं, वो चलेगा. जब बीजेपी के प्रवक्ता आपको आईना दिखाती है, तब आपको आपके पेट में दर्द होता है, आप बौखला जाते हैं. This is not acceptable. It cannot be a one-way street. I have as much freedom of expression as you have. Okay. Now let me make the second and important point. Harsh Mandar, part of Sonia Gandhi's National Advisory Council, was on the advisory board of George Soros's Open Society Foundation also. So the Congress link is established. There are reports and the veracity will be, effectively concluded. It is said that ex-Prime Minister Manmohan Singh's daughter Amrit Singh is also a part of the Open Society Foundation's Justice Forum. Again, another Congress link exposed. Then, very importantly, it is said that Lawyers Collective, a so-called NGO of Indira Jaisingh and her husband, Mr. Grover, Anand Grover, they are ex-George Soros fellows. And they have never written a single good thing about India, forget about Narendra Modi. Since 2014, वो यही लिखते हैं कि democracy खतरे में है. Then let us talk about Basharat Peer, the open editorial head of New York Times, an ex-George Soros fellow. Go and see his full biodata. You will always see him saying that Kashmir is not a part of India and Modi के अंदर democracy खतरे में है. Respond to this, Qamar Zaman Chaudhary. This man. No, Padmaja, simple question. We declare ourselves as a mother of democracy. Now, why the hell are we so rattled by this Bhakts Mandali with one statement from a 92-year-old man? What difference it makes to you a are vibrant rattled. democracy? People will be rattled, sir. People will be rattled if you'll find collaborators in your own country. People can have wet dreams about, effecting a regime change in India, sitting in Hungary, sitting in the United States, sitting in Munich. That's not a problem. But when you find people collaborating in India and willing to buy into this rubbish, that is the real headache. That there is an entire ecosystem which the likes of George Soros are cultivating in India. Okay, fine. I got your point. There is absolutely no collaboration with the Congress Party and Open Society Foundation. Even I might file a link with Organizer Research Foundation with the Bharatiya Janata Party. That's also another story. Who is funding ORF? That has to be disclosed. Okay, you are saying there is no collaboration, yet it is very strange that you find people participating in Bharat Jodo Yatra, which is a very closely vetted march, by the way. Not anyone can walk in. You've got people like Shashi Tharoor hobnobbing with such people. You've got other links which Sanju Verma has also mentioned. And finally, if you're talking about trying to get validation from the likes of George Soros, Vivek Srivastava, you might think, oh, the spirit of what he said is something that India agrees with. I would rather believe that India agrees with the spirit of this video from Turkey, where an entire country today is thanking India, which has reached out to them in times of need, despite the fact that they've taken an anti-India stand against us in the past. And that is the sentiment from Turkey that I think all of India is going to agree with. I'm going to leave it at that. Thank you very much, both gentlemen and Sanju Verma, for joining.
just days after promoting the man who sought a ban on Ramcharitmanas and called seers butchers and terrorists, Swami Prasad Maurya within party ranks, Samajwadi Party today sacked two women leaders, Roli Tiwari Mishra and Richa Singh, while the one-line tweet put out by the party's Twitter handle announced the expulsion but did not assign a reason for the action. The sacked leaders made it clear that it was a price that they were made to pay for opposing Swami Prasad Maurya's anti-Hindu utterances, leading many to ask, is this really about freedom of speech or indiscipline, or is it about silencing any voice that speaks up for the Ramcharitmanas? वो लोग ये बयान अपने भविष्य की राजनीतिक सुविधा को देखते हुए दे रहे हैं। एक साल से लगातार वो पार्टी के सीनियर लीडर्स को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे थे लगातार, और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी टैग करके बहुत सारे आरोप लगाना शुरू कर दिया था। तो जिन व्यक्तियों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर समाजवादी पार्टी तक किसी में आस्था नहीं बची और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गंभीर आरोप महसूस करने लगे, तो उन लोगों ने एक तरीके से खुद ही पार्टी छोड़ दी। को सोचना चाहिए कि आपका एजेंडा हिंदुओं को गाली देना है, हिंदुत्व पे बात नहीं करनी है, भगवान राम के अनुयायियों पे गोलियां चलानी है, उन पे अत्याचार करना है, क्योंकि एक वोट के तुष्टीकरण के लिए ये पार्टी बनी हुई है। इसलिए दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the show now is Dr. Roli Tiwari Mishra and Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party. Roli Tiwari जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। आज पूरे दिन समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि आपकी जो रामचरितमानस पर टिप्पणी है उसको लेकर के नहीं, सिर्फ इनडिसिप्लिन के लिए आप पर एक्शन लिया गया है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने आज तक पिछले 16 वर्षों में, अनुराग जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे थोड़ी ज्यादा सीनियर हूँ मैं समाजवादी पार्टी में। मैंने 3 पीढ़ियों के साथ में समाजवादी की पार्टी की काम किया है। आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तो इतने समय से, मैं लंबे समय से समाजवादी पार्टी हूँ, तो मैंने कभी अनुशासनहीनता नहीं की। केवल मैंने प्रभु श्री रामचरितमानस और श्री राम के सम्मान में आवाज उठाई तो अनुशासनहीनता हो गई, और पार्टी पटल पर पहले आवाज उठाई थी। उसके बाद जाकर के जब मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे हैं अपने लोगों को बेच करके, जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया है, तब मैंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्टी से या तो निकाला जाए या उनको समझाया जाए कि ये हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान है, और हम सनातनी लोग हैं, हम अपने धर्म ग्रंथ का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बात मैंने पार्टी पटल पर बखूबी रखी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए ये डिसिप्लिन लागू नहीं होता क्या? उनके लिए अनुशासन लागू नहीं होता? वो रोज मीडिया में जाकर के चर्चा करते हैं, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ट्विटर पर भी लिखते हैं, और वो जब उनसे कहा जाता है कि आपकी पार्टी की एक महिला आपका अंदर विरोध कर रही है, तो वो कहते हैं वो ना पिद्दी है, ना पिद्दी का शोरबा, उसकी औकात और हैसियत नहीं है कि मेरे सामने खड़ी होकर के बात कर सके। इस तरह की बातें वो मेरे लिए भी कहते हैं। तो क्या मेरा अंदर खून इतना पतला है, या मेरी शिराओं में रक्त नहीं है, या मैं सनातनी नहीं हूं कि मैं अपनी बात नहीं रखूंगी? इसको अनुशासनहीनता नहीं कहते। कल ही आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने अनुशासनहीनता इन दोनों महिलाओं से हुई है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सब सही किया है, उनके लिए एक शब्द भी नहीं, उनके लिए बस इतना कह दिया कि उनके निजी विचार है। इनको भी निजी विचार कह के छोड़ देते। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और खासकर समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है, लोहिया के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, और अपने आप को अनुशासन में रखती है। समाजवादी में सभी कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई नेता तो है नहीं, और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बात उनको नहीं अच्छी लगती है, उनको लगता है कि बात उनके विरुद्ध जा रही है, तो वो अपनी बात पार्टी के अंदर में शीर्ष नेताओं
उनके साथ बैठ के या उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप कोई बात को अगर आप बाहर चिल्लाना शुरू कर देंगे तो ये डिसिप्लिन एक्शन तो है ही, क्योंकि आप अनुशासन भंग कर रहे हैं। क्योंकि आपको कोई बात, हर किसी को, भाई इतनी बड़ी पार्टी है, कोई कभी किसी बात किसी चीज़ से खुश होता है, कभी किसी चीज़ को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो अपनी बात आके राष्ट्रीय नेतृत्व या अपनी जो सीनियर नेता है उनसे अपनी बात कहता है और उन तक अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद ही ये बात कहने लग जाएं कि समाजवादी लोग रामचरितमानस को नहीं मानते, समाजवादी लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, कौन रामचरितमानस को नहीं मानता? कौन समाजवादी रामचरितमानस का अपमान कर रहा है? या हमारे धर्म को तो सब, यहाँ तो सब अपने अपने धर्म को मानने बहुत अच्छी तरह मानते हैं। लेकिन झूठा माहौल बनाना, झूठी बातें करना, झूठा प्रोपगंडा फैलाना, ये पार्टी के उसमें आता है कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर कोई भी शिकायत, मैं फिर कह रहा हूं कि झूठी बातें करना, कि बार बार ये कहना कि हम सनातनी हैं, वो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं समाजवादी लोग। कब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम रामचरितमानस को नहीं मानते? किस समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा? हमने कभी बोला है क्या? हमने कहीं बोला कि हम रामचरितमानस नहीं मानते, या हम लोग दिवाली नहीं मानते, या होली नहीं मनाते, या हम जन्माष्टमी नहीं मनाते? ऐसा किसने कहा है? सबसे बड़ी मूर्ति अगर कृष्ण भगवान की लगी है तो सैफई में चले जाइए, सबसे बड़ी मूर्ति कृष्ण भगवान की वहाँ लगी है। सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। तो हम लोग तो भगवान का मानने वाले लोग हैं, और झूठा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अपने ही लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अपने सदस्य हैं, जो हमारे अपने सदस्य हैं, जिनके साथ जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, हमेशा हमारे साथ उठे बैठे हैं, और वो लोग इस तरह की बातें करें। बताइए, रो लीजिए, सवाल का जवाब देना है। हाँ, जवाब दीजिए डॉक्टर, रो लीजिए। अनुराग जी मेरे भाई हैं, और कभी भी भाई के रिश्ते या परिवार के रिश्ते खत्म नहीं होते। समाजवादी पार्टी ने अपनी बेटी को विदा किया, हाँ विदाई थोड़ी दुखद तौर पर की है, लेकिन मेरी हृदय आत्मा मन समाजवादी पार्टी में ही है। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि जिस लोहिया जी की बात आपने प्रारंभ में की, वो लोहिया जी रामलीला मेले की बात करते थे, वो लोहिया जी रोज श्री रामचरितमानस पढ़ते थे। मैं अनुराग भाई से बनी विनम्रता परंतु दृढ़ता से ये सवाल करना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि एक तरफ पार्टी जो श्री रामचरितमानस का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के ये शब्द है, सनातन धर्म का सत्यानाश हो, ये उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं किसी भी देवी देवता को नहीं मानता, श्री रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये उनके शब्द हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। उनके शब्द हैं कि किसी भी प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं सारी चौपाइयों को जो हमें पसंद नहीं है उनको मैं हटा दूंगा। तो मेरे तमाम सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से थे, जो मैंने पार्टी पटल पर ही पूछे थे। अनुराग भाई, आप भी जानते हैं मैं कितनी मेरा अनुशासन प्रिय हूं। मैं एक फौजी अधिकारी की पत्नी हूं, मुझे अनुशासन का अर्थ और महत्व दोनों ही पता है, और इतने वर्षों तक अगर मैं पार्टी में हूं तो अनुशासन की बदौलत ही पार्टी में हूं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैंने अनुशासनहीनता की है। अनुशासनहीनता तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। प्रोपोगेंडा से क्या मतलब है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे हैं, नामजद अपराधी है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उनको आप महासचिव बना देते हैं, और उसके बाद मुझे, जो मैं कहती हूं कि भाई ये गलत हो रहा है, मुझे और एक और महिला को पार्टी से निकाल देते हैं। तो ये आप कितना भी आप कह दीजिए कि हम सनातन द्रोही नहीं है, हम राम द्रोही नहीं है, हम रामचरितमानस द्रोही नहीं है, लेकिन जो आपका एक्ट है रामचरितमानस जलवाना, आप जो है संतों को आतंकवादी बताना, ये अनुशासनहीनता नहीं है? अनुराग भदौरिया जी, इस पे भी थोड़ा सा एक्शन हो जाए। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी, कमाल की बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी अनुशासन को भंग करते हैं, अगर अपनी बात पटल पे नहीं कहते हैं, पार्टी फोरम में आके नहीं बताते हैं, और फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, प्रोपगेंडा फैलाने लगते हैं, झूठ। अब क्यों फैलाते हैं, क्यों करते हैं, मुझे बार बार प्रोपगेंडा की बात कर रही हूं, मैं तो सीधे सीधे आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। प्रतियां तो जलाई गई ना रामचरितमानस की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जलवाई, उसके अगले दिन उनका प्रमोशन कर दिया गया। इसमें प्रोपगेंडा क्या है? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो, उन्होंने आतंकवादी बोला है संतों को, इसमें क्या प्रोपगेंडा है? इसलिए अरे सुन तो लीजिए, अच्छा सुन लीजिए ना। हमने कहा कि जिन्होंने प्रतियां जलाई हैं, क्या समाजवादी ने उसको सपोर्ट किया?
क्या समाजवादी पर आपने एक्शन भी तो नहीं लिया कि हम निंदा करते हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रतियां जलवाएं तो वो निजी विचार है। कौन थे वो जो जलाने वाले? जलाने वालों पे एक्शन समाजवादी, अरे समाजवादी पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैंडल से किसी का विरोध आया? क्या आप किसी प्रवक्ता ने इसका विरोध किया? बात कह लूं, देखो मैं लड़ने नहीं आया हूं यहाँ पे। पार्टी में लाखों लोग की पार्टी में विरोध करने वाली सिर्फ रोली तिवारी मिश्रा थी जिन्होंने कहा था कि हमारा धर्म ग्रंथ की प्रतियां नहीं जलानी चाहिए। अब मैं बोल लूं? बोलिए। देखिए, हम लोगों ने हमेशा जहां पूछा गया मैंने कहा ये गलत हुआ है और हम सब निंदा करते हैं। सबने उसकी निंदा की, किसने नहीं की? ये जबरदस्ती बोलना कि किसी ने नहीं, कड़ी निंदा तो एक तरफ है ना, एक्शन तो कुछ नहीं लिया गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसी छूट मिली है कि वो छाती ठोक करके जानते हैं कि मैं कुछ भी बोल करके निकल जाऊंगा, और अब इन दोनों के निष्कासन के बाद वो ये भी जानते हैं कि मेरे खिलाफ जो आवाज होगी उसको चुप करा दिया जाएगा। तो आप किसकी तरफ है अनुराग जी? ये तो जग जाहिर हो रहा है। देखिए, वो शायद पद्मजा जी आपको ज्यादा मालूम होगा, मुझे लगता है कि हमें अपनी पार्टी का नहीं पता है, पद्मजा जी को ज्यादा मालूम है। सर, अगर कोई भी आदमी, कोई भी वोटर, कोई भी पार्टी की आपकी गतिविधियां देख रहा है उसको तो जग जाहिर हो ही जाता है ना। अगर मैं रामचरितमानस को सुबह शाम गालियां दूं और मेरे को निजी विचार का एक शील्ड मिल जाए प्रोपेगेंडा फैलाने और दो महिलाएं कहें कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है और उनको निकाल के बाहर किया जाए, तो फिर तो साफ हो जाता है अनुराग जी। मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, प्रोपेगेंडा के आगे भी बोलिए। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ क्योंकि आप प्रोपेगेंडा पे अटक गए हैं। एक सेकंड रोली जी, एक सेकंड, आप प्रोपेगेंडा पे अटक गए हैं। आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ अनुराग जी, सीधा सवाल, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मेरी बात जाने दीजिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को निजी विचार रखने का हक है तो क्या रोली तिवारी मिश्रा को भी निजी विचार रखने का हक है? एक निजी आस्था रखने का हक है? अनुराग भदौरिया जी, अपनी बात कह लो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसका आप अगर किसी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है किसी व्यक्ति को भी, किसी भी कार्यकर्ता को, तो वो पार्टी के पटल पे कह रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में बोल रहे थे कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए? वो भी तो पब्लिक में आकर के बोल रहे थे सर, वो भी तो रामचरितमानस के इंसल्ट पब्लिकली कर रहे थे। आपको क्या, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई चिट्ठी लिख के अखिलेश जी को बोल रहे थे। बोला तो हमने बोला कि भाई उनका अपना व्यक्तिगत, किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो इनका व्यक्तिगत विचार क्यों नहीं हो सकता? रोली जी का इनका भी व्यक्तिगत विचार बोल करके छोड़ दीजिए। बार बार आप प्रतियां जला, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, अरे मेरी बात नहीं समझ कर, बार बार आप प्रतियां जलाने का जो आप एजेंडा चला रही हैं कि हम समाजवादी को रामचरितमानस का विरोधी दिखाना चाहती हैं आप, तो आपका एजेंडा हो सकता है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, आप कह रहे हो नहीं जलाएंगे। मैं कहता हूं हम लोगों ने समाजवादी से कोई लेना देना नहीं। रोली जी, समाजवादी से कुछ लेना देना नहीं है, आपका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, ये प्रतियां जलाने की जो आप बात कर रही हैं। रोली जी, हमने कब बोला? देखिए, पहले रोली तिवारी मिश्रा का एजेंडा प्रोपेगेंडा बता दिया मेरे प्रिय भाई ने पहले मेरा एजेंडा प्रोपेगेंडा बता दिया। आपने सवाल किया तो आपका प्रोपेगेंडा बता दिया, पद्मजा जी कह दिया कि आप प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। ये समस्या ये है कि जो आंतरिक लोकतंत्र जिसकी बात लोहिया जी करते थे कि आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसकी बात आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदैव की। आप सोचिए, उनके एक तरफ जनेश्वर मिश्र जी थे, एक तरफ मोहन सिंह जी थे, सामने बेनी बाबू थे, पीछे उनके अमर सिंह खड़े होते थे, बगल में उनके आजम खान खड़े होते थे। क्या सलाहकारों की मंडली थी। आप इस मंडली पर नजर डाल लीजिए जो वर्तमान में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। आप कह रहे हैं कि जो लोग समाजवादी, जिन्होंने प्रतियां जलाई, भाई जानते होंगे उनमें से कुछ लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं, क्या उनको पार्टी से निष्कासित किया गया? यानी श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों को निष्कासित नहीं किया गया, जो श्री रामचरितमानस के सम्मान में बोला उसको निष्कासित किया गया। एक सेकंड, आप कह रही हैं कि प्रतियां जलाने वाले समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। अनुराग जी तो साफ मुकर रहे, वो कह रहे हैं कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक ये जलाने वालों का। देख, आप कंफर्म कर रही हैं कि वो सदस्य हैं जिन्होंने प्रतियां जलाई हैं? रोली जी, हमारा एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। अरे सर, मेरा क्या एजेंडा है? तो खुद समाजवादी में थी आज सुबह तक, महासभा के लोग हैं, आज सुबह तक आपकी पार्टी में थी। महासभा के जो ओबीसी महासभा के लोग हैं, जो एक जाति विशेष का व्यक्ति है, आप पता करवाइए किस पार्टी के सदस्य है। आपकी खुद की जो पार्टी की सदस्य थी अनुराग जी, वो तो साफ कह रही है आपके समाजवादी लोग हैं वो।
पद्मजा जी, पद्मजा जी आप कमाल करती हैं कि मतलब आप तो डंके की चोट पे कह रही थी, अभी आप पद्मजा जी आप कह रही हैं हम पता लगाएं। मैं देखिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बात ये नहीं है, बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभी समाज के अंदर में सामाजिक न्याय देने में विफल रही है। समाजवादियों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई उठाई है, सामाजिक न्याय, हम समाज के अंदर उन पिछड़े वर्ग जो वंचित वर्ग है उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, ये लोग उसको धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। पर धर्म में सामाजिक न्याय के लिए दूसरे वर्गों को गाली देने की जरूरत नहीं है ना, हर वर्ग को न्याय होना चाहिए और हर वर्ग की आस्था होती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई होने जा रही है, की बात करनी चाहिए थी, लोहिया जी की बात करनी चाहिए थी। आप 500 साल पुरानी 600 साल पुरानी श्री रामचरितमानस को लेकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बार बार फिर रामचरितमानस को लेके आया, हम कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो रामचरितमानस, यही दिक्कत है। मैं क्या दिक्कत है, देखो मैं नहीं देखो बात सवाल ये है, सवाल है हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप लोहिया जी की लड़ाई लड़िए, आप महात्मा गांधी की लड़ाई लड़िए, हम भी संविधान को मानते हैं। संविधान के प्रथम पृष्ठ में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, प्रभु राम और सीता की तस्वीर बनी हुई है जो मौलिक अधिकार है। लेकिन आप देखिए एक बात सुनिए अनुराग भाई, ऐसे नहीं होगा कि पीछे से आप विरोध करवाएंगे और सामने से आप सनातनी होने का दावा करेंगे। आपका सत्य मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अनुराग भदौरिया, अब मैं बोल लूं, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो अपनी बात कह रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है। अगर उसको उसकी बात में लगता कि भाई उसकी बात में कोई बात है तो पटल पे कहता है, लेकिन अब जो कह रही है अच्छी बात है, उनको वो कह सकती हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो एजेंडा जो चलाते हैं ना वो नहीं चलाना चाहिए कि समाजवादी लोग बड़ा रामचरितमानस कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते शोषितों को वंचितों को न्याय मिलना चाहिए? सर बट शोषित और वंचित को न्याय मिलने के लिए रामचरितमानस को गाली देना जरूरी है, ये कहां लिखा है? और किसने आपको बता दिया कि दलित और जो शोषित वंचित हैं उनकी रामचरितमानस में आस्था नहीं है? उनकी भी रामचरितमानस में उतनी ही आस्था है जितनी रोली जी की है या फिर आपकी है। ये किसने फैसला कर लिया? पद्मजा जी, और आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी स्वतंत्रता देते हैं पार्टी में कि आपने रोली जी को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया पार्टी से, अच्छा नहीं लगा सिर्फ दो चीज बोलने के लिए। नहीं मेरी बात सुनिए, एजेंडा जी, पद्मजा जी आपको एजेंडा जी बोले तो कैसा रहेगा? आप अपने एजेंडे में फिक्स है, ये बिल्कुल गलत रहेगा सर, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। जब आपके पास कोई भी सामने तथ्य लेके आ जाता है तो आप ये वर्ड प्ले, आपको लगता है कि मैं एक ऐसा जोक मारूंगा तो मेरे को ट्विटर पे बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे। पर सर लोग भी देख रहे हैं कि जब आपके पास तथ्य खत्म हो गए अनुराग जी, तो आप ये पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता। आपसे मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ, एक सेकंड, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जितनी आस्था रोली तिवारी मिश्रा को है रामचरितमानस में, जितनी अनुराग भदौरिया को है, उतनी ही दलित शोषित वंचितों को भी है। तो सामाजिक न्याय और रामचरितमानस साथ साथ में चल सकते हैं, दोनों अलग नहीं है। हमने ये बोला, सुन लीजिए, नहीं ये जो एजेंडा बार बार, इसीलिए तो हमने बोला ना मैडम एजेंडा, हम कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि समाज के अंदर में कैसे दलितों को, शोषितों को, कमजोर वर्ग है जिनको कुएं पे पानी नहीं पीने दिया गया, जिनको गांव में रहने नहीं दिया गया, जिनको दरवाजे से निकलने नहीं दिया गया, जिनको स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया गया, सालों साल उनके साथ अन्याय होता रहा, उनकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। हम बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं, हम महंगाई की आवाज उठाते हैं, हम समाज में समस्याओं की आवाज उठाते हैं कि समाज को कैसे न्याय मिले, समाज का हर व्यक्ति कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मुद्दा जो है विकास और बेरोजगारी, महंगाई पे ना हो पाए, इन सब चीजों पे होता रहे। हम कह रहे हैं कि जो प्रतियां जलाई गई उनका विरोध करते हैं, हम उनके साथ नहीं है, निंदा करते हैं। मौर्य जी को चुप करा देना चाहिए, क्योंकि ना उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, ना उन्होंने दलितों की बात की, वंचितों की बात की, वो तो रामचरितमानस के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। रोली जी ये बता दीजिए, क्योंकि आप बार बार इतनी एजेंडा की बात हो रही है और अब भाजपा की बात भी की जा रही है, अब आप भाजपा जाएंगी ना, आप भाजपा के इशारे पे कर रही हैं ये सब।
मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाजपा की आयु सिर्फ 43 वर्ष है और सनातन धर्म की आयु 6000 वर्ष पुरानी है। तो जब भी कोई धर्म की बात करता है, जब भी सनातन की बात करता है, जब भी भगवा की बात करता है, जो हमारे सनातन का परम जो हमारा रंग है, या जब भी हम बात करते हैं हिंदुत्व की, प्रभु श्री राम की, श्री रामचरितमानस की, तो ये अनुराग जी जैसे लोग हैं जो ट्रोलर्स कंपनी है, वो कह रही थी आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस का एजेंडा जी है। तो बड़ी दुखद स्थिति है, इस देश में करोड़ों सनातनी है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, करोड़ों साधु संत धर्माचार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये मानसिकता निकाल दें कि जो सनातन धर्म को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी चीज, इस बात की क्या गारंटी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है? क्योंकि इस तरीके का माहौल उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं किया। हमारी जो समाजवादी पार्टी जिसको लड़ाई लड़नी थी वो था रोजगार के मुद्दे पे हमें लड़ना था, हमें जो है जाति जनगणना के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी थी, हमें समानता के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी थी, हमें समता के मुद्दे पर, हमें वंचितों और शोषितों को व्यापक अवसर मिले इस पर लड़ाई लड़नी थी। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितनी विकासशील योजनाएं चलाई, सबसे ज्यादा विकास समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। 2012 से 17 तक अखिलेश जी के विजन ने किया। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतनी शानदार एक्सप्रेस वे बनाई, तमाम योजनाएं दी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर हॉस्पिटल से लेकर मेदांता तक बनाया, साइकिल ट्रैक बनाया। वो सारी चीज मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी इस पार्टी की, मुझे राजनीतिक पहचान दी, लेकिन मैं सदैव कहती रही कि इस तरीके के मुद्दे पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। स्वामी प्रसाद जी मलाई चाट के चले जाएंगे, हम लोग जो पार्टी के कोर वर्कर है उनका बहुत नुकसान होगा। हम लोग जब जनता से वोट मांगने जाएंगे तो ये रामचरितमानस सभी जगहों पर पड़ी जाती है, हमको मार मार के गांव से भगाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाड़ी में सिक्योरिटी में जाएंगे, हम लोग जनता से वोट मांगने जाएंगे। अनुराग भाई टीवी पे बैठे होंगे हरा कुर्ता पहन के, पद्मजा जी को एजेंडा जी बता रहे होंगे, लेकिन रोली तिवारी मिश्रा जब गांव गली मोहल्ले सड़क में वोट मांगने जाएंगी, सवर्णों से, ब्राह्मणों से, बनियों से, ठाकुरों से, साधु संत महात्माओं से, तो उनको वहां से मार मार के, पत्थर मार के भगाया जाएगा। और ये बात मैंने पार्टी पटल पर बराबर रखी, सभी के सामने रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी, और अभी तक मैं रखती रही। मुझे क्रोध उस दिन आया जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाया, और वो लोग शामिल थे। आप देख लीजिएगा, 3 जाति के लोग उसमें, एक धर्म का व्यक्ति या 2 जाति के लोग हैं, आप पता करवा लीजिएगा। दूसरी चीज, मुझे क्रोध इस बात पर भी आया जब मुझसे ये कहा गया कि पार्टी का एजेंडा है कि आपको भी ये बात कहनी है कि श्री रामचरितमानस में संशोधन किया जाए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कह सकती, इसलिए नहीं कह सकती कि मानस मेरी श्रद्धा का ग्रंथ है, मेरी माँ में श्रद्धा है, मैं उनको संशोधित नहीं कर सकती। मेरा रंग उनके रंग मुझसे दबा हुआ है तो मैं उनको संशोधित नहीं कर सकती। क्या आप अपने पूर्वजों को संशोधित कर सकते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने माता पिता के संस्कार और पूर्वजों को संशोधित कर सकते हैं? कुछ चीजें आस्था की बात होती है। भारत की आत्मा में श्री रामचरितमानस बसता है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, आस्था का केंद्र बिंदु है, प्रत्येक घर में कड़-कड़ में पूजे जाते हैं। आप उनका मुद्दा मत उठाइए, मैंने ये कहा था। आप भी देखिए, उल्टा मुझे एजेंडा का बता दिया, प्रोपेगेंडा बता दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले पर उनको प्रमोशन दे दिया, यानी पार्टी पूरी तरीके से। और दूसरी चीज मैं अनुराग भाई से कहूंगी, what part of this is about Shraddha and what part of this is about propaganda? I think it is amply clear, and it is best left to the judgment of the people. For the time being, though, it's quite interesting that when the Samajwadi Party talks about freedom of expression and discipline, it doesn't seem that the same standards are being applied even-handedly. Let the people judge. For the time being, Roly Tiwari Mishra, Anurag Bhadoria, thank you very much for having joined me. Thanks for watching. The News Hour at 10 will be right back after the break. mm एक्स्ट्रा, लंबा व्हील बेस, सेकेंड रो में ज्यादा जगह। यह है कहानी BMW
3GL की। Namaste Times Drive family, I'm Kranti Sambhav. Welcome to the first drive review of BMW 3 Series GL यानी Grand Limousine, जो obviously regular 3 Series से ज़्यादा लंबी है, wheel base के हिसाब से कुछ एक changes इसमें हुए हैं, तो इस वजह से ये हम वीडियो कर रहे हैं उन changes के बारे में बताने के लिए और ये भी जानने के लिए कि जो दावा है कंपनी का सेकेंड रो में ज़्यादा आराम का, ज़्यादा स्पेस का, वो दावा पूरा हो पा रहा है या नहीं। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कार, सबसे पहले टाइम्स ड्राइव के बारे में आपसे बात करता हूं या अपील करता हूं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सोशल मीडिया पर You're watching the News Hour at 10. Two men have been burnt alive after alleged abduction over cow smuggling allegation in Rajasthan's Bharatpur. Kin of the alleged cow smuggler demand justice, call for ban against Bajrang Dal, citing the Arait outfit's involvement. Meanwhile, the police forms the special teams to nab the accused. Cops say deceased Junaid has 5 cases pertaining to cow smuggling against him. Congress leader Sachin Pilot refuses to comment on the killings, says he's waiting for the Haryana police to conclude the probe. AIMIM chief Asaduddin Owaisi slammed delayed action by cops, demands strictest action against the accused. The News Hour at 10 will be right back after the break. हमारे साथ मौजूद हैं मोहुल, who is founder and CEO of Matter. Thank you for joining us. Thank you. So Mohul, we've already seen this bike. I still don't know what you guys going to call it right now, but hopefully, we're going to know about it in a couple of months, I believe, and more details that we already know about specifications and what you are offering with this bike. But उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं. So इस बाइक को लेकर थोड़ा टाइमलाइन, if you can explain किस तरह का टाइमलाइन रहने वाला है and कब इसका officially launch up. You're watching the News Hour at 10. Accused Monu denies charges in an exclusive conversation with Times Now. Monu says he's ready to cooperate with the cops. Devgarh District Collector says Shiv Barat from Baidyanath Jyotirlinga will continue on its traditional route and Section 144 has not been imposed either. IT Department issues statement on BBC surveys, says several evidence indicate tax has not been paid on foreign entity funding. Karnataka Chief Minister Baswaraj Bommai tables the state's budget, announces Rs 1,000 crore for renovation of temples and mudds. Karnataka opposition leader Siddaramaiah and other congressmen wear flowers on their ears as a mark of protest, calls the budget worst in history. आ चुका है पोको X5 Pro का बॉक्स टेबल पे। अब इसको जल्दी से करेंगे अनबॉक्स। ब्लैक और येलो कलर का ये बॉक्स है, जो ज्यादातर पोको के स्मार्टफोन पे आपको येलो कलर, जो इसका सिग्नेचर कलर है, वो दिखाई देगा। Sometimes it is really tricky to take the tapes off, so let me try it with my nails. One tape down successfully. गाइज, ये जो फीलिंग है ना अनबॉक्स करने वाली, ये काफी ही मजेदार लगती है। जब भी आप कोई नया गैजेट अनबॉक्स करते हैं तो मजा तो आता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, बॉक्स के पीछे की तरफ बहुत सारे डिटेल्स लिखे हैं, बॉक्स के बारे में फीचर्स लिखे हैं, वो दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे जब फोन हाथ में आ जाएगा। इनसाइड द बॉक्स यू गेट दिस लिटिल पेपर बॉक्स एज वेल, जिसमें ज्यादातर पेपर वर्क और प्रोटेक्टिव केस ही होता है। लाइक आई सेड, वही मिला है हमको। यहाँ पर एक छोटा सा मैनुअल टाइप है। यहाँ पर फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस और साथ में सिम इजेक्टर टूल, विच इज वेरी बेसिक। अब मुझे बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है हमारा डिवाइस, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। उफ, वेरी वाइब्रेंट एंड पेपी येलो कलर। Just like the box, the smartphone also boasts the combination of black or call it dark gray along with yellow.
और कॉम्प्लीमेंटिंग डिजाइन आपको फ्रेम्स पर भी दिखेगा। जो कलर आपको यहाँ कैमरा मॉड्यूल पर दिख रहा है, पीछे ये जो पैच पर दिख रहा है, वही आपको उसी कलर का फ्रेम दिखाई देगा विद येलो एक्सेंट्स। वेट की बात करें तो अच्छा है, लाइट वेट है, और यहाँ पे जो येलो है दिस इज लिटिल बिट डल, नॉट एज वाइब्रेंट एज द बॉक्स और प्रॉपर येलो। वैसे तो मैट फिनिशिंग है, लेकिन ये जो कलर है इसके अंदर हल्का सा ग्लिटर आपको दिखाई देता है। फ्लैशी नहीं है, अच्छा है। इसको साइड में रखते हैं, अभी ऑन भी करेंगे और उसके बाद स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं और क्या आपको बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। यू ऑल्सो गेट अ 67 वॉट चार्जिंग ब्रिक। I really liked how they have written 67 watt here. बहुत ही बढ़िया फॉन्ट लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने को मिला, वरना ज्यादातर यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं 67 और 80। तो ये जो इसने हल्का सा छोटा सा अटेम्प्ट किया है विद द डिजाइन, आई रियली लाइक। साथ में आपको मिलता है टाइप सी केबल विद ऑरेंज एक्सेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसको भी साइड में रखते हैं and that's it, that's all you get inside the box। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जरा मुझे इसे ऑन करने दीजिए। फोन को यहाँ पर सेटअप करना मैंने शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख पाएंगे दिस फोन रन्स ऑन MIUI 14। साथ इसको हम सेट करते रहेंगे और फोन के बारे में बात करते रहेंगे, बिकॉज यही तो सबसे ज्यादा बढ़िया पॉइंट होता है जब भी आप नया फोन सेटअप करते हैं, द फीलिंग ऑफ सेटिंग अप and shifting to a new smartphone। तो यहाँ पर इसको सेटअप कर रहे हैं। Till that time, let me talk about the display। तो यहाँ पर आपको with Poco X5 Pro मिलता है AMOLED display with the support of 120 Hz refresh rate। Basically, scrolling, animations should be smoother, क्योंकि 120 Hz अब ज्यादातर फोन्स पे स्टैंडर्ड भी हो गया है। There was a time when 90 Hz used to be the standard refresh rate, but 120 अब ज्यादातर फोन्स पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दिस डिस्प्ले इज प्रोटेक्टेड विद Corning Gorilla Glass 5। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्ले को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द फोन इज ऑल्सो ऑफरिंग IP53 रेटिंग to prevent all the dust as well as water splashes। यहाँ पर और जैसे कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा bezels are pretty thin। इनफैक्ट यहाँ पर चारों साइड पे मुझे सेम bezels दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेजरमेंट उनका, और थिन भी लग रहा है। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे देखेंगे तो आई थिंक इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है दैट शुड एड टू इट बिकॉज ऑफ द थिन bezels। और सामने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पंच होल कैमरा। दिस इज अ 16 मेगापिक्सल फ्रंट शूटर टू क्लिक ऑल द वाइब्रेंट सेल्फीज एज वेल एज मेक वीडियो ब्लॉग्स। कैमरास की यहाँ पे बात की है तो एक बार आपको पीछे वाले कैमरास के बारे में भी बता देते हैं। रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक पैच यहाँ पे स्ट्रेच किया गया है। नाउ दिस कैमरा मॉड्यूल houses 3 cameras in total। The main camera is a 108 megapixel shooter। उसी के साथ आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस एज वेल एज मैक्रो लेंस फॉर ऑल द मैक्रो फोटोग्राफर लवर्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिजाइन की। रेयर पैनल के बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्रेम की बात करें तो राइट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर। उसी के नीचे येलो एक्सेंट में आपको मिलता है पावर बटन। दिस पावर बटन ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। वो कितना फास्ट है ये आपको रिव्यू वीडियो में बताएंगे। बॉटम की बात करें तो आपको मिलता है सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर। एवरीथिंग इज इन ब्लैक गाइस, सो आई डोंट नो कि वीडियो में कितना दिखाई दे रहा होगा। फ्रेम ब्लैक है और सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो भी ब्लैक हैं, तो आई रियली होप आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम इज प्रीटी नीट। ओह माय गॉड, नाउ दिस स्मार्टफोन एक्चुअली गेट्स सम ब्राउनी पॉइंट्स, क्योंकि ऑन द टॉप यू ऑल्सो गेट अ 3.5 mm हेडफोन जैक। सो दिस स्मार्टफोन इज एक्चुअली अ मिड रेंजर, और इस प्राइस पर आपको इतनी चीजें मिलना इज एक्चुअली a good thing। So basically the phone fetches brownie points for the 3.5 mm headphone jack। अब एक बार चलते हैं सेटिंग्स की ओर और देखते हैं कि फोन में और क्या क्या है। सेटिंग्स में हम आ चुके हैं, एक बार देखते हैं फोन के बारे में। जैसे कि हम बता चुके हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस फोन रन्स ऑन MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 12।
तो ये आपको मिलता है इस स्मार्टफोन के साथ। अब बैटरी की बात की जाए तो दिस स्मार्टफोन comes with 5000 mAh battery capacity, and like I showed you the adapter, this also supports 67 watt fast charging technology. जाते जाते एक और चीज बता दूं that this newly launched X5 Pro comes with the support of Dolby Vision as well as Dolby Atmos.